It's been too long, I've been on the grind. New song about getting high. I've been singing about the pieces on my mind. You ain't new songs I would never use song to satisfy. I've been thinking about the past, yeah, you and I. I've been crazy lately, don't ask why. Maybe we could be alright, or maybe we could just try. I've been trying to live a little best life, but I just keep on thinking about my next high with a little red eyes. When my head's spinning underwater, and I thought that I just forgot her. She got magic just like I put her for me. Maybe I've been trying too hard, maybe I've been aiming too far, but let's face it, this is who we are. Too long, I've been on the grind. New song about getting high. I've been singing about the pieces on my mind. You ain't new songs I would never use song to. What up guys, क्या हाल है? Welcome to the stream. I think I was clear आ रही होगी. Not more a surprise. ऐसा है क्या? Don't worry, इतना ऐसा surprise नहीं. Hello Maneep, welcome to the stream. Hello Akshar, hello Anup, hello Rishabh. Too long. What's up? Hello Rishabh, I'm good. Hello Bhavya, hello Anu. Is clear आ रहा है? Hello Crazy Sam. और क्या हाल है? I'm all good. I'm all good. Welcome to the stream guys. Actually थोड़ा late इसके लिए हो गया. मेरे phone पे बैटरी थी नहीं. And I usually क्या कहते हैं? Have my chat on my phone. क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ तो मेरे पास सेकंड वाइट है नहीं तो सारे तरीके so that was one thing. Okay, आज थोड़ा अलग स्ट्रीम रहेगा हमारा. We'll play rock. But as you know, in our RP community, we have a huge conflict about PD SOPs. सबने सुना होगा हर किसी की स्ट्रीम पे SOPs on top and all that thing. सुना ही है ना तुम लोगों ने? Hello विवेक. सबने सुना होगा SOPs on top and PD के SOP है and क्या कुछ नहीं and all that stuff. So रहा है ना सब तो. Today what we gonna do? I'm just gonna make you understand what are the actual PD SOPs in a different way. अब different way क्या? मैं तुम्हें SOP खोल के नहीं बताने वाला हूँ आज actually तुम लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत कमांड हाई कमांड आप ब्रेकिंग एसओपीज एंड ऑल दैट थिंग ऐसे तुमने सुना होगा लोगों से, बट एक्चुअल एसओपीज हैं क्या वो तो तुम्हें भी नहीं पता. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, we'll have a test for all the command and high command member and that's gonna be surprise test. So अभी पता है मैंने क्या किया, मैंने पीडी के एसओपीज का एक्सेस ब्लॉक कर दिया है completely, so no one can read it right now. So the only access is Hans and me having it, and we're just gonna have their exam today. We'll ask questions according to the SOPs, and if they fuck up, okay? आपसे पता चले तो सही, हाँ. So if they're gonna make some fuck ups, I'm just gonna demote them, like in the SOP test which I'm gonna have it right now, and work accordingly. कि अगर एक कमांड मेंबर को पता नहीं है कि SOPs क्या है हाई कमांड को, then I don't think so he deserves to be at that position.
जल्दी करो 42 का ध्यान रखना प्लीज डोंट से बैड वर्ड्स मैंने बैड वर्ड्स कहाँ कहे सो टुडे लेट्स गो विल हैव प्रॉपर एसपी एग्जाम एक मिनट रुकना मैं जस्ट पानी लेके आता हूँ फिर आई एम जस्ट गोना गो पानी Take me back to when we were kids, smoking cigarettes, pressing your lips on my lips, dancing like nobody else was watching, oh, like nobody was watching, no. Oh, take me back to when we were young, riding through the city with no purpose, top down, I wish time would stop and just stay frozen, yeah. And I'd hold on to those moments, oh. Okay, I'm back. Okay. Subwrite yes, SOP on top. Like the F words. Okay, sorry. कल छाती सिंह के लिए बुरा लगा. Chhati Singh, okay, guys, do you even know why Chhati got suspended? Chhati is being suspended क्योंकि for a time being उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती है. जब भी किसी ऑफिसर पे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उसको सस्पेंड किया जाता है. सो ताकि वो किसी और को जाके इन्फ्लुएंस ना करे. ये रीज़न होता है. वरना रेड के लिए आई नीड ऑल हाई कवर्स. नहीं. अब एक एक करके लेंगे देखेंगे ना सबको. Right. अरे क्यों आ रहे हो भाई बीच में. कौन है ये. मैट कॉर्डल किया ना शायद से 4-1 है. Hi bro, how are you? I'm all good man. Saita, how are you? ये देखो कैसे चला रहा है. I'm waiting for the reaction of when they listen word test. हाँ वो तो करते हैं. I wish to get GTA 5. Wait for the what we say epic sales. वो देते रहते हैं बीच में. वेट कर लो हम आ जाएगा GTA 5. हेलो. What the fuck? दरवाजा क्यों नहीं खुला? Nice outfit though. Oh no, not the impound. What is the epic sale? अरे epic games करके एक वो है स्टोर है, डिजिटल स्टोर है, you can buy.
बेबू का गुस्सा ठंडा और वो आईसी गुस्सा है, वो सी थोड़ी ना कुछ, वो आईसी शी इज मैड, तो उसमें क्या ही कर सकता है। ठंडा तो हुआ होगा वो तो अभी, आज तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब है तो आएगी नहीं शायद से। आज इंस्ट्रक्टर की जैकेट पहनेंगे। तो ईएमपी रख देते हैं। छाती सिंह का केस आया पर आए पे है, आया डिसबैंड वो तो है। हेलो कैप्टन, हेलो शुभम, क्या हाल है? कौन कौन ऑफिसर ऑन ड्यूटी है? We have Cash, we have Yoa, Miss College, Cordell। किससे चालू करें? वो बैम्बू वाले का बहुत फनी था वो कैरेक्टर डिलीट कर दिया, वो एक दिन का कैरेक्टर था। लेट्स एस्केप किया डूड। साइटेशन बोनस सीआईडी रखो, ये क्या है? ओहो मैट कैश लेते विद कैश, ओके ओके। हाँ छाती सिंह कॉर्वेट नहीं चलाता। और मेरी क्लास टीचर सरप्राइज टेस्ट और भाई देव आज आजा आजा आजा, साथ में लेंगे टेस्ट, आजा आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा सर्वर में। जिसके खराब ट्रैकर करंटली एट कैसिडी ट्रेल, स्टैंड बाय फॉर डायरेक्ट। उनके जिसके सबसे खराब वो होंगे ना, बेबू गुस्सा हो गया डीएमडी से is going towards Sandy Shores or Great Snipe। जिसके सबसे खराब कॉम्स होंगे ना हम उसको बुलाएंगे, ठीक है? लेट्स सुनते थोड़ा। राइन बीएम शॉप पे हूं। हेलो हिट्स। Stab City, he's coming towards the Yeah, he's coming towards me. He's coming towards me. Yeah, I got it. What happened? 99 I have a 99 vehicle A. 99A and it's in Stab City. It's a drop. Heading towards respond to 39. Responding to MRPD. I'm responding to Respond MRPD. to 38. Alright, McCoy, keep the eyes on him. Other units respond to 30. Juggler. Everyone juggler. If you see anyone, I mean if you see any. बेबू हम आएंगे क्या ड्यूटी पे? I'm near Mark. Should I just continue on this 99 or should I back off? Check if enough units are there for 13A or else respond. There's a shootout going on, I guess. Mission bro. A from Okay, I'm 76 to 90. 76 to 90. इसको मार दिया ना? Cash ma'am. जुगलर दिखे तो मारो। Cashman is down. किसको मार दिया? I need 77. आ रहा हूँ on the way. A from I Every unit break off. I'm leaving this. I'm 76. कॉम्स जन रन चूते हो गए। कैश को उठाओ और पीडी लेके जाओ। कैश को उठाओ लेके जाओ जल्दी पहले। कौन सा जुगलर कलर? Black, graphite black. We got plates right? Flag it there. Yeah, flag. It's perfect. मैट कॉर्डल के जॉर्ड कॉम्स। Negative. The plate is not flagged. I'm gonna flag it now. 76 to pillbox plus 1 officer down. मैं सुन रहा हूँ, मैं कॉम से सुन रहा हूँ। Be on lookout for black color juggler. मैं कॉम सुन रहा हूँ इनका। Plate flagged also. जो आज इस पे रेडियो पे भसड़ करेंगे ना उनका टेस्ट सबसे पहले होगा। देख के मारते हैं भाई, इनसे कुछ होता तो है नहीं। बाइक लेके जाना एक जगह यहाँ से। Where was the juggler last seen?
सबसे पहले तो मैट आ गया. Outside at region. Good, alright. I'm gonna go on Los Santos Freeway. Hope it comes this way. Negative. No, I'm coming from Los Santos Freeway. No way. I don't see any black Jugla. It's still in the city. They won't be coming. They won't be going outside city. They're inside somewhere. Yeah, 10-4. That माँ गाना मेरे साथ. always. कॉल सुन रहे हो? मार Mustang. मार गाना मेरे साथ. Mustang. The Challenger. Dispatch, if possible, don't go solo. If possible, go with your ride along some partners. 200 to Matt. 10-4. Yes, sir. 25 at captain's office, please. Yes, sir. Is cash secure? Yeah, she is secured. I need double up units for her bike. I will get it. I'm solo. चलो. I thought dispatch anybody have for ride along now? Yeah, 10-4. I'm on Route 68. I'll come to MRB here. So. $200 will be off comms. एक काम करो, कॉर्डल ऊपर आओ. सर ऊपर आओ. ऊपर चलेंगे. चलो साले. सर आज एस प्लस आई बताया. क्या बात? 2 घंटे चल क्या रहा. बात 1.5 है? घंटा. हेलो देंगे, हेलो तो से. अरे यार तो मैं अरे सबकी तारीफ थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा था बस. रुक जा एक सेकंड, रॉक से बात करना. बोल ना. मैं आता हूँ. हाँ वही बात कर जाता. दरवाजे लॉक हाँ करो. सर. मेरे को भी बात करना है. हाँ अरे तो मैं तो कर लूँ बात पहले. आओ बैठो, कॉर्डल तुम सामने. हाँ सर. अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. This is 315 Sergeant Matt Corder from State Andreas Park Rangers Department. And how long you have been what we say a sergeant? Sergeant, I guess 2 weeks, 1 week, I guess 1 week. क्या बोले? 2 weeks, 1 week sir, 1 week. 1 week ही तो हुआ sergeant बने हुए. तो मैं एक चीज समझ में नहीं आ रही थी. क्या बोल रहे हो? 2 weeks, 1 week. खुद को नहीं पता क्या तुम्हें? अरे सर ये एग्जैक्ट याद नहीं आता ना. 1 week हुआ है फिर याद आ गया. Okay, let me clear why you are here today. So today, after looking at your comms, Hagas comms, सर आप तो कौन सा Hagas comms? कौन से कौन सा Hagas? I am here to take your SOP test again, and if you fail, you will be demoted back to senior ranger. अच्छा ठीक है सर. Are you ready? रेडी तो हूँ. ठीक है. हम वैसे खोल के बैठने वाले तो है नहीं. हम तो बोल दूंगा. खोल के बैठने वाले तो मिलेंगे भी नहीं. एक्सेस ही उड़ा दिया मैंने. ऐसा क्या? हाँ. मैं नहीं खोल रहा. ठीक है. Okay, we'll start from the basics. The first word in the SOP, that is professionalism. What do you understand by that? I mean, we need to be professional on feed, off feed as well. Like, we need to respect everyone. We need to respect our seniors. Follow chain of command. Follow the hierarchy. Do not do stuff which are not in the SOP and everything. Yes. Do you consider yourself as professional? No, sir. Do you? I mean, I am professional, but sometimes I have fun as well. Okay, you mean you are not professional according to the SOP? That Sir, means sir, I am professional. Sir, एक सेकंड फोन म्यूट करने दो. रुको. अरे फोन काटो भाई. हाँ सर. You don't consider yourself as professional, as you said right Sir, now. I am professional. I am saying the truth that I have fun sometimes as well. Which means you are going against SOPs. Sir, not in situations. I mean, while patrolling, I have sometimes. While patrolling is also
a situation whenever you are सर 41. मतलब पेट्रोलिंग हाँ, आउटसाइड सिटी जब हम फिशिंग लाइसेंस चेक करने जाते हैं जब थोड़ी तब मस्ती भी करते हैं बस। तब भी while being on duty everything is considered under one situation. सर लेकिन And हम इतनी बिल्कुल प्रोफेशनल के बाहर नहीं जाते ना, मतलब रहते हम प्रोफेशनल okay babe, रहते I saw that, मेरी प्रोफेशनल जान देखा मैंने। ऐसा बोल रहा हूँ मैं। एक मिनट रुकना, इसका डीएम देख लेता हूँ। Yes, so yeah, let's go back. Okay, so you know what is professionalism, and you are telling me while being on duty, sometimes you have some fun instead of being professional. सर वो सामने वाले बंदे को देख के सर। सामने वाले सबके बंदे को सामने। देख के। Okay, okay. Next in thing, okay. After professionalism, what do you mean by accountability? अकाउंटेबिलिटी Yes. याद नहीं आ रहा सर। तुम सार्जेंट ही हो ना? अरे सर याद नहीं सर, रट के थोड़ा ना बैठे हुए हम एसओपी। सर रट के नहीं बैठता मैं सर एसओपी कुछ भी। रट के नहीं बैठे हो तभी तो तुम हरकतें करते हो। सर अब बताओ मैंने क्या हरकत करी थी दिनों से? कुछ भी नहीं करता सर। आप मेरे को पहले देखो और अब देखो सर, अब तो मैं कुछ भी नहीं करता सीरियसली। आराम से करता हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं करता, उंगली भी नहीं करता किसी को जाके। ठीक। बताओ आपको कंप्लेंट आई मेरी अभी तक? रोज कंप्लेंट आती है तुम्हारी, रोज के रोज। कौन दे? मुझे तो बता दिया करो सर, कौन सी कंप्लेंट आती है? मुझे कोई बताते ही नहीं। कंप्लेंट आई है तभी तो तुम्हारा आज टेस्ट हो रहा है। एक तो तुम्हारे हगास कॉम्स, जब कॉम्स देने होते कब हुई सर? हुई कब? सबसे ज्यादा कॉम्स के लिए किस सार्जेंट को बोला जाता है? तुम ही हो ना। और मैं अकेले तो बोलता नहीं हूँ, मैं अकेले तो नहीं सर अब बोलता, कुछ तो किसी ने नहीं मिस्टेक्स। बोला कॉम्स के लिए, किसी ने कॉम्स के लिए बोला ही नहीं मेरे को। चलो कोई नहीं। सर देखो आज आपने बोला तू हगास कम देता है, ठीक है। आज मेरे को किसी ने बोला नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा ये बताओ? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल सस्पिशन एंड प्रोबेबल कॉज? सर रीजनेबल सस्पिशन में ऐसा होता है कि लाइक आप you don't have any strong belief or evidence that the crime was committed, you had some evidences and you're not sure that that crime was committed, और probable cause में ये होता है कि you have very strong evidence against that crime has committed and you can arrest a person directly. And What if him? reasonable suspicion में Okay, what if I'm charging a person for a misdemeanor charge? हाँ What kind of provision it comes under reasonable suspicion or probable cause? सर प्रोबेबल कॉज ही होगा ना, क्राइम तो करा ही ना सर, लेकिन अब दोनों के अलग मिसडेमेनर और फेलनी में अलग अलग होता है ना। Or what I people mean, do we go for misdemeanor? for what people? Yes. I mean misdemeanor charge depends on the type of charge. जैसे अभी marijuana meth का होता है तो उसमें quantities होती हैं। If you're carrying joints under 9 then you will be charged for misdemeanor, or if you're carrying meth under 20 you will be charged for misdemeanor, और अगर उनसे ज्यादा होता है तो फिर felony charge लगता है उनके ऊपर। Okay, you mentioned a word right now, felony. What is the main difference between misdemeanor, felony, and normal infractions? I mean sir, felony is a strong I mean felony means that we have all the evidences and proof regarding the crime being committed. और misdemeanor में होता है sir, we have some proofs, I mean some evidences about the crime be committing, so we charge them for misdemeanor. Is that so? I guess so. What if I charge you for misdemeanor possession of marijuana? I know you have more than 9 joints and less than 20. I'm charging you Sir, for that. It depends on the person being So arrested. If no, he's no. being So very so you cooperative. told me it totally depends that we have no proof and all that thing. Like less evidence, but I have full evidence, but I'm still charging you for misdemeanor possession of marijuana. Sir, then it's choice of the officer, and if the person is being very cooperative, if he surrendered, then we can charge him less for his cooperation. It depends on officer's mentality. Okay, and what about probable cause?
सर प्रोबेबल का क्या डेफिनेशन बताया ना, इफ वी हैव स्ट्रांग बिलीफ एंड एविडेंसेस रिगार्डिंग Strong द क्राइम belief. कमिटिंग फॉर Belief. सर इट बिलीफ में मतलब एविडेंसेस ही आते हैं। मतलब चलो नॉर्मल वर्ड, इफ वी हैव तुम स्ट्रांग डीओजे को एविडेंसेस बिलीफ पे ऑफ प्रूफ द करोगे? सर नहीं, लेकिन एविडेंसेस बोला ना, एंड एविडेंसेस। What evidences? सर एविडेंसेस में बहुत कुछ आता है, डीएनए केसिंग्स, प्रोजेक्टाइल्स, और क्या कहते हैं अपने उसके जो गाड़ी के पार्ट्स टूटे होते हैं, फ्रैगमेंट, हाँ व्हीकल फ्रैगमेंट्स और फोटोग्राफ्स, बहुत कुछ आता है। What do you mean by the Fifth Amendment? केस लॉ याद नहीं है सर। नहीं याद है तुम्हें? सर नहीं है, सही में याद है, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ सर, सही में याद नहीं केस लॉ। ठीक है। हाँ सर। मिरांडा राइट से क्या समझते हो? Sir, Miranda rights gives the person a right for, I mean, Miranda right basically are the suspect's right to call a lawyer, or it says that as well, that if the suspect says anything while being read, after being read the rights, so that information can be used in the court. And what do you understand by force of escalation? Sir, I mean, force of escalation means to escalate the force if the situation is getting worse. For example, there are 4 suspects in front of you, and we are 5. If the 4 officers get down, I am being the solo one, so I can escalate my force to class 2 for neutralizing. And what about match of force? Sir, match of force means what kind of weapon or vehicle the suspect is having. We should match the force what he's having. We should not escalate the force in that moment. Do you do that? Main question is that. Do you even do that? चलाता हूँ। हाँ सर चला, हाँ I do that सर। You do that? एक ही कार चलाता हूँ सर You मैं sure? Explorer, हाँ। यस सर, देखो वेपन भी मेरे को अलाउड नहीं, ना मेरे कोई और गाड़ी अलाउड है, तो मैं करूँगा क्या? Consider me if you fail today's test. You don't do it. हाँ Yes. सर वापस बोलो। अगर तुम आज के परीक्षा में हाँ नकारात्मक, अरे सर सिर्फ हिंदी चलेगी, हिंदी चलेगी। हिंदी चलेगी? अगर आज के टेस्ट में तुम फेल होगे, समझ लेना तुम नहीं करते। सर आपके ऊपर। सर देखो मैंने, देखो सर बिना मालतू पिट देना। What is the main motive to be an officer of yours? To serve the country, to serve the city, sorry. To serve the city. To protect the city, to protect the civilians. So why the fuck हर बार तुम्हारी गोली पहले निकलती rather than being any criminal? तुम्हारा काम है उनको जिंदा पकड़ना। सर मैं तो गोली चलाता ही नहीं सर, सामने वाला बंदा गोली जब चलाता है, जब मैं गोली चलाता हूँ। ये तो मैं ही पहली बार सुन रहा हूँ कि मैं लोगों को बजा के सबसे पहले गोली चला रहा हूँ। ये कहाँ से आ रहा है? मैं तो चला ही नहीं आज तक गोली। मैं चलाता हूँ लेकिन सामने वाले जब मेरे को एक चीज बता दो, पूरे शहर में सबसे ज्यादा नफरत मैट कॉर्डल से की जाती है, क्यों? सर वो तो मेरी गाड़ी से करते हैं ना, वो करता था, अब छोड़ दिया, अब नहीं करता। अभी भी नहीं करते? तो एक काम करते हैं, आज से तुम्हारी स्पेसिफिकली तुम्हारी ऑन फील्ड सुपरविजन गया भाड़ में, तुम्हारी एक्सप्लोरर ले ली जाएगी। सर आज से तुम एक ही गाड़ी चलाता हूँ, सिर्फ राइड अलोंग्स पे जाया करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट को कब तक का फुल फॉर्म क्या होता है? परस्यूट इंटरवीन टेक्निक। इतना लेट? पक्का गूगल किया है? सर नहीं देखा सर, याद कर रहा था सर, नहीं देख, कुछ भी कहीं से नहीं देख रहा मैं। देखो आपके मॉनिटर पे देखो सर, ये कुछ अजीब सा चल रहा है इस पे, देखो ये क्या पता नहीं अजीब सा कुछ चल रहा है, इस पे भी नहीं कुछ दिख रहा। नहीं देखा मैंने, मैं याद कर रहा सर, वो IoT याद था, पी भूल गया था। कैसे बच्चे तुम? ओके, पिट कब और कैसे करी जाती है? Sir, there are 2 types of pit, soft pit and hard pit. So if there is, I mean, अगर जब pursuit के अंदर there is harm to a civilian and officer, and if the people are ramming the other officer's vehicle, and so we can perform a pit. First, the pit should be soft pit so that the vehicle is not disabled, but it's I mean, it's like slow, it gets slowed on the street so that the officers can catch up, and if they start like, मतलब यही है कि it's basically disable a vehicle
इन व्हाट कंडीशंस? हम एक सर बताया ऑफिसर ना, एक पिट के ऑफिसर लिए कब जाता है? when he tries to ram officer's vehicle, when he kidnapped someone, when he keep changing vehicles. So they go for pit. Are you dumb? हाँ सर, परमिशन ले। अरे सर यही तो होता है एसओपी पढ़ी है तुमने ठीक से? सर, पढ़ी है सर। यही लिखा है एसओपी में? सर एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है, लेकिन होता यही तो है सर, जब नहीं यही लिखा है मैंने एसओपी में। नहीं सर, एग्जैक्ट याद नहीं है ना, एग्जैक्ट थोड़ा बता रहा हूँ। कॉर्डल, मेरे को आगे तुम्हारा टेस्ट लेने का जरूरत नहीं है। यू आर बीइंग डिमोटेड टू अ सीनियर रेंजर फॉर नाउ ऑन एंड यू आर बीइंग रिमूव फ्रॉम कमांड रोल। सर प्लस यू आर बीइंग रिमूव फ्रॉम एफटीओ। तुम्हारा 1 वीक बाद वापस टेस्ट होगा। इफ यू पास देन ओनली यू विल गेट बैक टू योर नॉर्मल रैंक। थैंक यू। मैंने करा क्या सर, ये बताओ सर। बाकी के ऑफिस इतना कुछ करते हैं, मैं तुमसे फिर भी बहुत कुछ कम करता हूँ। सब हेमटर है मेरे। सीरियस बहुत बनी लगती। नेक्स्ट कौन है? लेट्स सी। रुको, रेडियो कॉम्स पे सुनेंगे। जो रेडियो कॉम्स में आगाज करेगा उसको बुलाएंगे। रेडियो कॉल से नहीं चल रहा है। 200 डिस्पैच। dispatch. I'm attentive. 10%. Okay, 22 cash 25 at MPD first floor briefing room. Cash ma'am is in the pillbox ward in an ICU. Oh, 10-4. Demotion का देना yes. For it to dispatch, do we have a park ranger for the latest 911? हाँ बताइए। सर क्या हाल है आपके? सर मैं बोल रही थी, हाँ। मैं तो ओपीओ जी। क्या हो गया? मैं ओपीओ जी। क्या पियो दी? नहीं ओपी। अच्छा ओपी क्या हाल है? अच्छा बढ़िया। मैं क्या बोलता है? इसके लिए मैंने वो हटाया। मैंने आपको चाबियां दे दी, तो आप एज ए रिसेप्शनिस्ट मेरे से पेमेंट ले लिया करो। हर वीक के $6,000 मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? अभी आई है आवाज, ठीक है? सुना इस तरफ? हाँ परफेक्ट आ रही है अभी। अच्छा मेरी बात सुनी है आपने? जी मैंने सुनी। ओपी आप कि आपका ट्रैकर नहीं दिख रहा एंड ऑल दैट थिंग, आप साइन इन नहीं कर पा रहे। नहीं हाँ मैं ट्रैकर तो चाहिए ही नहीं, बस साइन इन नहीं कर पा रही। हाँ तो साइन इन करने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी पेमेंट आप मैं आपको दे दूंगा, लाइक पर वीक आपका 6,000 पेमेंट आपको मिलेगा, बट आपको आना पड़ेगा, ठीक है? आती तो हूँ मैं रोज। हाँ तो बढ़िया, आप चाहिए फिर अपनी ड्यूटी पे और रिसेप्शन पे वेट करिए। मल्लू पुलिस ऑन ड्यूटी। अरे अब नेक्स्ट टाइम बोलिएगा मल्लू पुलिस 1041। अच्छा मेरी आपकी आवाज हमला हो जाता है। हाँ अरे आपके हमले के लिए रुकिए, मैं आपको एक टेजर दे देता हूँ, ये ले लीजिए। और नहीं अगर मैं डाउन हो जाती हूँ, हाँ 603 बैक ऑन रेडियो 1। ऐसा तो ठीक है, जाती हूँ तो मैं क्या करूँगी? कैसे बताऊंगी पुलिस को कि मेरे को बचा लो? मैं जस्ट पुट 911 311 तुरंत आ जाएगी आपके नाम सुन के। इतनी प्यारी महिला को मैं क्या बोल रही थी? हाँ अगर जैसे गुंडा ने मेरे को टाइम कर दो, अगर आसपास ही होंगे मेरे तो समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ। तो आपको एक रेडियो चाहिए, बट आप रेडियो ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक मैं आपको ड्यूटी नहीं देता, लाइक तो वो इश्यू हो जाएगा। वही बोल रही हूँ, अगर मैं तो क्या कह रहे हो? ठीक है मैं आपको बताता हूँ इस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है जी 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 Take Longwood, you have eyes on the field.
but I haven't seen anyone on the नेक्स्ट कैश को देंगे, पहले देख के आते कैश को हुआ क्या. Okay, I can see people now. Yeah. Nova. क्या हो गया, क्यों टेस्ट ले रहे हो? You want to Nova? ऐसे ले रहा हूँ यार, if they're fucking up ले रहा To हूँ. mark Nova, I think it's not real. अपने ही ऑफिसर्स को मेरे अगर एसओपीज नहीं पता तो फिर बाकियों के एसओपीज क्या करेंगे? हाँ हाँ स्टीव. 99 ले जा रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कैश से मिलने जा रहा हूँ. Don't respond. Did anybody responded to Shelly calls? Oh, sir, it was a code for over there. I think so. Is Cash fine or she's still there? She's in ICU now, ma'am. She's in ICU. So can we meet her? And for ICU, I guess so. ICU number 370. You can ask the doctors. Hello, doctor. Hello, sir. Is Officer Cash inside? Yeah, but he's. Ward number was resting 370. it. Oh, she's taking rest. Okay. Yeah. He's Okay, sleeping. fine. Oh, fine. Got जो it. conscious नहीं है अभी तक समझ ठीक रहे है. Okay. Once she's there, just tell us. हो? जब वो उठ जाएंगी तो हम आपको बता देंगे. जी. Yep. No units behind him. 2499 है. Towards base. It's pretty tough. Do you need assistance on 99 है? A4, I need another Bring an interceptor. I'm 76. Class of vehicle? A plus. It's a low rider, sir. I would prefer weak unit if ever, because it might go to elevation. It's currently heading north on Raider Shrine. So they're breaking up a few. इधर है यार. Oh. एक मिनट. कहाँ गया? Right exit. Right, up. Coco भी smart है. Yeah, He's she's. going towards the okay. स्टेशन की तरफ आएगा नॉर्थ ऑफ फोर्ट. चले सर. Keep it. I'll take like whenever it's possible. राग, अब जब तक तुम्हारा टेस्ट खत्म नहीं होता वो उनके वाले क्या बोलते 203 और पुलिस ICU ज्वाइन कर ले. मे बी तो टेस्ट ICU के बाद भी होगा ना, ऐसा थोड़ी है. I got it. तो अभी बहन का ओ भाई ये गाड़ी कहाँ से रुक गई भाई? अभी तक तो मूविंग थी. हेलो. gonna be coming up to the 24/7 at not. I think you got enough unit, guys. How many units do we have? Four vehicle units is enough for this. You guys continue with the AD. I'm backing you up. You have 4 vehicle units. Hello, Joker. Towards Joshua Road. State. Again, will be approaching. Back to state work. right now. Oh no! I fucked up. Right. Sorry, ma'am.
He's there. Okay, I can't do it. 50 made a U. आगाज तो है भाई देख भाई चेस के टाइम आगाज नहीं करता मैं। चेस के टाइम हम प्रॉपर रहते हैं, चिपके रहते हैं समझ रहे हो? कुछ भी मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी। Quickly do a head count. It's like we have got more than it. Yep, do it. Danger 1 times. भाई बाइक कैसे कार को पिट दे सकती है? क्या लॉजिक है? 6 unit. So the Explorer? 1. भाई Yeah, 7. Whip up. कुछ भी भाई लॉजिक्स भाई। इससे अच्छा मेरी ड्राइविंग ऑफ कोर्स मेरी जान, आपकी ड्राइविंग अच्छी है मेरे से। अरे मल्लू आंटी कहाँ घूम रही है? और बकरा मिला वो नहीं है। हेलो राना क्या हाल है? ऑल गुड ऑल गुड। हाँ नहीं मैं वापस आ रहा हूँ, आज मैं थोड़ा पीडी में ही रुकने वाला हूँ, ज्यादा ड्यूटी पे नहीं जा रहा बाहर। सर वो हमारा वो बैच देते तो। हाँ मैंने आज बैच के लिए किया ना सबको, तो रात तक मिल जाएगा सबको। ये पे जी What is this? मैं आपको एक बात बताना भूल हाँ हाँ बताओ। कि बस इतना कर दो कि आपको बैच चाहिए? 1-1 करता है। हाँ नहीं हाँ? वो तो चाहिए मेरे को, वो मेरा हक है। मेरे को बस इतना कर दो, कोई 3-1-1 करे कंप्लेंट लिखवाने को कि मैं उधर वेट कर रहा हूँ, तो मैं भागते भागते उसकी कंप्लेंट लिखने चल दूँ। अच्छा रुको मैं दे ही देता हूँ आपको रोल, रुक जाओ। स्टेट आईडी बताओ अपना। एक मिनट 130 ऐसा सोच रही हूँ अगर मेरा ट्रैक करने वाला है तो मैं जब पीडी के अंदर रहूंगी भी साइन इन करूंगी, जब भी पीडी के बाहर भी उसी टाइम साइन आउट। है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? एक मिनट नमस्ते रॉक सर। नमस्ते नमस्ते। क्या दे दिया? अब आप कर सकते हैं। सर हाँ हाँ ऐसे सर K9 का क्या हो गया सर, बता दो ना मेरे को। 14 तक वेट करो, बोला ना सनेडा मार्क्स में आएंगे, वही करवा सकते हैं। और मेरे को डेट जाना था वैसे। अरे मल्लू आंटी कैसे लेफ्ट जा एक्सप्लोरर, लेफ्ट जा। लेफ्ट राइट नहीं। एक बारी आईडी कार्ड दिखा दो पूरा। मल्लू 1040 गाड़ी कर रहे लास्ट टाइम। कोई तो हार्डी संधू 200 हार्डी पोको भाग गई भाई। दिस इज रेडियो 2 सर। तनफा 200 हार्डी। am I 10 to hardy? किधर है ये संधू? You are 10-2 but don't know Hardy is on this radio or not. मैं भागी नहीं हूँ। अच्छा
What are the units? Do we have on frequency 1? The patrol officers, wait, +1. Can you update your call signs for me? क्या है बताओ? मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा मेल देखा? नहीं, वो नहीं हो सकता। देखो। नहीं हो सकता। नहीं हो बस सकता? नहीं। क्यों? हम तो 250 के कर रहे हैं। 10-4 sir, I did. अबे कोई नहीं लेगा। हाँ, नहीं लेने दो ना, वही तो हम चाहते हैं। हैं? हाँ, कि हर कोई चूतिया मुटिया क्रिमिनल आके लाइसेंस लेके जाएगा, एस्केप करेगा उस चूतिया हरकतों में। अगर देखो तुम तो मैं कल क्या हुआ कि फुल एडवर्टाइजमेंट कर रहा था कल, पता है इस्माइल भाई सब आने वाले आज 6 बजे से हाँ तो लाइसेंस। अच्छी बात है। मेरे को ये बताओ, हाँ हाँ, ये कौन बंदा था 25,000 में लाइसेंस बेच रहा था? सब लोग बोल रहे 25,000 तेरे लौंडे। पहले था पहले, और उन पहले सबके लाइसेंस हटा दिए गए। सबके लाइसेंस रिवोक कर दिए वाले। ओके, सो 35K जो मेरे को वो लोग देंगे वो तो ट्रेनिंग के हैं। 35 ट्रेनिंग के हैं। ट्रेनिंग के हैं। यप। अब मैं उस 30 मतलब क्या ट्रेन करवाऊं, मतलब कौन सा चॉपर, कौन सा ये? अगर उनको चॉपर देखो, फॉर चॉपर इट्स 35K एंड फॉर प्लेन इट्स 40, ठीक है? अलग अलग ये अलग कौन है। बताएगा मेरे को? मैं की ठीक अलग अलग, दोनों को अलग अलग, दोनों चाहिए तो अलग 5K एंड 40। यप यप यप, अलग अलग लाइसेंसिंग दोनों है। तो जो तुम पूरा 35K चार्ज करोगे और अपने पॉकेट से प्लेन के पैसे दे देना, ठीक है? बाद में मैं तुम्हें प्लेन के पैसे प्लस तुम्हारी जो सैलरी एक साथ दे दूंगा। जैसे तुम्हारा 15K अभी नहीं, तुम पहले चार्ज कर दी तुमने? चार्ज नहीं करा है। हाँ तो पहले वो चार्ज कल करो डाल उनको। रहा। ठीक, चलो। Turn it to Steve. He's on ready to for the E+. Turn it to Aaron. What's your rank? 10-9? Senior officer. Okay, 25 at first floor, what we say, briefing room. Prepare kit file, please. पहले बता देना यार, मैं आ जाता लेने। भैया नोहा ने लाइसेंस काट दी क्या? अरे हमने वो बोला था ना कि पीडी में भी किसी को लाइसेंस चाहिए होगा तो वहां से होगा, जो भी होगा ये से। नहीं, पीडी का लाइसेंस डिफरेंट है। हमने तो वही बोला। अरे पीडी की लाइसेंस नहीं, पीडी में जो भी ट्रेनिंग है वो एयरएक्स पे होगा, ये कहा मैंने। तुम सुनते नहीं? ट्रेनिंग, सॉरी। हाँ ट्रेनिंग, हाँ तो ट्रेनिंग नोआ यार लाइसेंस बांट रहा है। हाँ तो लाइसेंस डिपेंड करता है। नोआ कैसे लाइसेंस बांट रहा है? नोआ तो है ही नहीं, मार्क और तो मार्क। हाँ तो वही बोला। कौन? रुको मैं बात करता हूँ। तो यार कंफर्म करो यार, क्या है? अरे बाय द वे ये मेरे को बताओ, कल मेरे को रेक्स बता रहा था कोई तो ऑफिसर का फायर हुआ है। क्या हो गया? कोई ऑफिसर फायर हुआ है बग शॉट की चोरी में। नहीं कोई नहीं हुआ फायर। रेक्स क्या बता रहा मेरे को? फायर हो गया, सस्पेंड हुआ है ताकि उस पे इन्वेस्टिगेशन हो सके सस्पेंडेड टाइम पीरियड में। मेरे को ये बताओ जरा K9 का कौन संभाल रहा है, क्योंकि जो संभाल रहा है वो देखता नहीं है। जो भी संभाल रहा है लाइक 14 से पहले K9 किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो हमारे सेनेटर मार्क्स में थे वही देते हैं K9, और वो अभी है नहीं 14 तक। मतलब वो मेरे को ला के देते हैं, मैं आगे सप्लाई करता हूँ। हेलो, अच्छा आवाज, तुम्हारी आवाज 14 एंजॉय कर रहे हो? ये सही हाँ ठीक है। सही। Aaron, update me at 20. How much time is gonna take? 2 minutes. I'm providing a repair kit to Mac. 10-4. इसका टेस्ट ले लो। अरे ये अभी प्रमोट है, फिर डिमोट हो जाएगा। छोड़ दो इसको, अभी जस्ट प्रमोट है।
जो पुराने ऑफिसर्स हैं और जो एकदम सीनियर ऑफिसर्स हैं, एक और ऑफिसर डिमोट होने की तैयारी में। जो पुराने ऑफिसर्स हैं ना, मैं उनको पहले अभी देख रहा हूँ, क्योंकि वो होते हैं जो नए ऑफिसर्स को सिखाते हैं। अगर वो फकअप कर रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है। वो मैवरिक आया क्या? मैवरिक 25 at first floor briefing room. I am on my way. Aaron, you can continue with your patrolling. I will deal with check first. 10 sir. जिमी को लियो। लेते आने तो दो जिमी को। कैसे आईटी कराने? All good, all good. How are you? 47 के 5000 लिए अभी, मतलब 50,000 हो गए थे। पीडी अकाउंट में 25,000 है। एरेक्स की सेल्स। Yo, what up, Captain? All good, all good. Just wait a minute. Hey, all of you guys. तो कोई ब्रांड का वो भी तो होगा। Can you go out the ground floor for हाँ, talk? जा रहे। चलो मिलते हैं। आ जाओ सनी सर। Yeah, sit down. How are you? Sit back on radio 1. Any active? All good? Pretty good. Yep, all good. Okay, you can turn off your radio. Yep, I just did that. So, you know why I have called you over here? No. Oh, I know. I guess I know. What Listen, do I you know? didn't to kill that guy. Whom you killed? Hello? Oh, wait, you don't know? Never mind then. Let's continue. What have you called before? Okay, I'm here just because of that only. You are just messing a lot with your SOPs. I am? Yes, you are. That is the fucking reason you were sent to DOC. Oh my god. Yes. So here along, we are gonna have your SOP test today. Oh, let's do it. मैं 20 का नहीं टाइम 22 मेरा अपडेट नहीं है. And if you fail, you will be demoted to a senior officer. Along with it, Whoa. PD What? command role and FTO role will be gone. I mean, that's kind of harsh, don't you think? Yes, I'm going harsh today. So you're ready for it? Yeah, sure, why not? So introduce yourself will first. you let me go? Sorry? If I say no, I'm not ready for it, will you just forget about all this? No, I'm just gonna directly demote you in that case. My name's Maverick. Only Maverick. This is how you like introduce yourself. You are an Current FTO, na? sergeant and a command member, Yes. LSPD, and the SWAT vice commander. SWAT vice commander. What the fuck is SWAT vice commander? Like, I am unknown about this rank. When did ये introduce कब हुआ? Huh? Oh, it was introduced by me and Peter the other. Currently 3 different commands in SWAT. One is SWAT commander, then I'm the second in command, and Hans comes around frequently. Okay. So let's go with the SOPs. Do you follow your SOPs? Do you feel our SOPs are on top? SOPs on top? Sure, sometimes not. Depends on the situation, So I like to think that I need to law, not SOPs. On the first note of SOP, there is a word named as professionalism. Do you understand the meaning for it? Yeah. What does it mean? Means being professional. It's being professional. Okay, you are being demoted to a senior officer. Wait, what? So answer me properly. What do you mean by professional? I think what it means is that you have to, respect everyone are in duty. You have to follow chain of commands. Basically, you have to appear as a lawman in front of everyone's eyes. You have to act super professional. Alright, अरे यार आदत है बस थोड़ा ध्यान रखो. Hello, Egypt. Carlo Johnson is also a very old officer. So that's it. Do you consider yourself as a professional cop? Yes, sir, I do. Then why you were sent to DOC?
That's because I. That's because I tweeted something I shouldn't have. Does it come under I think I'm learning from my professionalism? mistakes. No, sir, but I think I'm learning from my mistakes. So now on, you believe you are a professional guy. Yes, sir. I think I'm on the path to it. You are on the path, but you're still not professional. That means you're still breaking your SOPs. Not breaking my SOPs, but you know, sometimes a human makes mistakes, and he can only become better. What do you understand by appearance of an officer? Like, how much it symbolizes to the society, to the outside world, being. I think the appearance of an officer is like the utmost important for all the society to see, because they put our faith on us, and the only thing that matters is how we appear to them. Are we unlawful? Are we unjust? Or do they trust us? And what do you understand by accountability of an officer? Accountability means that the officer can actually be trusted and given the task so that he can handle it. And what if he fucks up? If he fucks up, then we have a really good striking system. We have really good striking system. Okay. Yeah. So I think you need to go what is accountability for yourself. Let it be. I'm just gonna simply jump into some case laws. What case law? I mean, that's like that. Yes, what do you understand by the Fifth Amendment? The what? What do you understand by the Fifth Amendment? What is Fifth Amendment? Tell me. I think it means that and no one can be searched without a proper warrant or a proper probable cause. What do you understand by the Raven Regulation Act? Raven. Honestly, I've never heard about it. You've never heard about it? Oh wait, are you talking about the bird law? Which law? Like that protects the. That protects the witness? No, I'm not gonna answer anything. You tell me, what do you know about it? I mean, to protect, the rares, the birds. What are they called? Ravens. Okay, then fuck off. You don't know anything. Shit again, F word. Sorry, boys. Okay. What do you understand by match of force? It means that we are using the force that is necessary, not overusing it, not draining our resources, and that actually gets done with minimal resources. What is the difference between accomplice, accessory, and attempted? Accomplice, accessory, and attempted? Yes. Accomplice is a person who is. Let me start with attempted. Attempted is a person who is like in the crime, which is basically the main suspect. Accessory acts as a out of the scope person that has been used in kind of way that is not directly conflicted with the crime, and an accomplice is something which is a bit more severe than an accessory, which had a hand in that thing, but he's also not directly involved. What is the... Okay, I'm just gonna name two charges for you. One is manslaughter. Okay. Another one is attempted murder. What is the major difference between these two charges? The major difference is in attempted murder, the person is still alive. There has been an attempt to murder him, but he survived that. And a manslaughter basically means the person is dead. Is that? जिंदा काट दिया क्या? ये होता है क्या? मतलब बताओ ठीक से. नहीं. तो क्या होता है मतलब? मतलब manslaughter का मतलब कोई बिना आफ्टर थॉट के किसी या फिर कोई मैलिस प्रोसिक्यूशन के बिना उसको मार दिया. मैलिस प्रोसिक्यूशन. अटेम्प्टेड मर्डर. श्योर. मैं वर्ड्स पे उस बंदे. हाँ.
बताओ. Hello. You know, like Uh-huh. manslaughter is like, you know, when किसी को when they murder someone Mm-hmm. without, you know, you can say intent to, Mm-hmm. or not directly, you know, like हो गया बस. What do you understand by the difference between embezzlement and money trafficking? Embezzlement, Hmm. I think it's like making the money which has been unlawfully obtained and using Sure. it to unlawful. Unlawfully, any kind of money that considered under embezzlement. And what is money trafficking in that case? Oh no, actually, hold on. Uh-huh. I think embezzlement is when the funds that has been given to, you know, a certain kind of a person have been used like not right, you know, they're used maliciously. What do you understand by maliciously? Something that is not right, like something that shouldn't be legal. Sorry? Something that shouldn't be legal. Something that should not be legal. Okay, so you don't know the difference between embezzlement and money trafficking. Okay, cool. What do you understand by HUT? When an HUT charge has been put on a person. Oh, you held until trial. Mm-hmm. That's like the most severe charges that we have. Mhm. And it doesn't have a, you know, court can only decide what fine or charge, or no, not the charges, but the jail time would be. So the person is sent to prison Mhm. and awaits trial in the court, and the judge passes the order. These are like the most Okay, severe crime. when you are allowed to take DNA of a person. Hello, Mr. Yeah. Maverick. When you are allowed to Yeah. take DNA of a person. Oh, that's a question. I thought you were going to say something after. When a person has committed multiple violent felonies, I mean, that can only do. We can ask for court to give a DNA court order to a DNA warrant to get it, or we have a strong suspicion. So why the fuck you that a guys always go and get up the evidences and make cases on it, huh? I'm gonna be honest with you. I never collect evidences. You never I always collect tell the cadets to evidences. do that. I You always mean tell you the are cadets to lazy? do that. No. I'm teaching cadets, sir. I did it when I was a kid. You did? Yes, sir. Okay, you're just At gonna that do time, it again. Yeah. Okay, what is the difference between joyriding and GTA? So joyriding is driving someone's vehicle without the Mhm. owner's permission or consent, Mhm. and grand theft basically means stealing Mhm. a vehicle with the thought of depriving the Mhm. owner from that vehicle forever. Okay, we'll do one thing. You are being demoted to senior officer. What? And your command role is being removed from now on. Come We're on, just gonna have one more examination next week. Someday it's also gonna be a surprise for you. Go and learn case laws. Okay, Maverick, you are free to go, and your FTO also has also been revoked. Oh my god, okay. आज सारे सार्जेंट हटा दूंगा मैं. आज सारे सार्जेंट हटेंगे. Next one. Mallu auntie, Maverick. हार्डी है किधर ये? 201 बैठा किधर है ये? अरे यार तो इसका ट्रैकर बग गया. उसका ट्रैकर बना.
और जो पास हुआ उसका उसका कुछ नहीं। जिम्मी को बुला, अरे कहाँ से बुलाऊं, आने तो दो। स्टीव आओ अंदर। लॉक कर दिया दरवाजा? आ जाओ, लेट्स गो। हेलो सर, अक्षर कैसे? बढ़िया बढ़िया। सीनियर ऑफिसर है। स्टेट आईडी बता दो। हाँ पता है मेरे को सीनियर ऑफिसर। अभी आता है, इट्स नाउ योर आदमी। अच्छा तो बताते देता हूँ। स्टीव क्या हाल है? हाँ जी सर बताओ। बैठो बैठो, आराम से बैठो, तशरीफ लो। इधर इधर इधर, लैपटॉप जहाँ बंद है उधर वाले साइड। सो स्टीव, हाँ जी। तुम एसओपी से क्या समझते हो? मतलब स्टैंडर्ड क्या समझते हो? have to follow every time when we स्टैंडर्ड are operating प्रोटोकॉल्स। तुम्हें लगता है हमारे डिपार्टमेंट में ये एसओपीज फॉलो होती हैं? सर देखिए, लाइक एसओपी फॉलो ऑफ कोर्स होती है, विदाउट एसओपी मतलब डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है। जी जी, अरे यार एक कॉल, थोड़ा तेज बोलो। मोस्टली टाइम एसओपी फॉलो होती है, बट समटाइम्स ब्रेक भी होती है। व्हाट आर, ओके मेरे को ये बताओ, व्हाट आर द वर्स्ट थिंग्स यू हैव सीन इन योर एंटायर करियर राइट नाउ, जिसमें तुम्हारे सीनियर्स ने एसओपीज ब्रेक कर दी हैं? शायद करी सीनियर्स ने सर, बेसिकली सबसे वर्स्ट थिंग मेरे एंटायर करियर में ये हुई है कि देयर वाज अ सिविलियन, लाइक मैं बहुत पुरानी बात है। जी 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 बताइए। व्हेन आई वाज इन माय स्टार्टिंग फेज ऑफ माय करियर, जी जी। देयर वाज अ सिविलियन, लाइक might he was doing some what do you say, criminal activity, and he was evading, right? So my seniors like due to my seniors mistake, like he lost his life, so that was What the the worst fuck? Who was Yeah. that senior? His name was Mr. Haji Mastan. And we are talking then, about then this city. Was he there? no, he was not. अरे नहीं, I'm like you asked my career, right? Career over here at Los Santos. Over here? Yes. मैं उसमें ये Worst कवर thing तो सर इतनी अभी तो कुछ वो उतनी वर्स्ट हुई नहीं है नहीं हुआ। मेरे दिमाग में तो वही सबसे वर्स्ट है। Due to officer's fault, civilian lost his life. So that was the worst thing in my life. ओके ओके ओके, चलिए कोई नहीं। लेट्स गो इग्नोर मिस्टर हाजी मस्तान। ओके, वी आर हियर फॉर योर प्रमोशन एग्जाम। ओके, और अगर फेल हुए तो ऑफिसर बनोगे, पास हुए तो प्रमोशन होगा। लेट्स गो विद द फ्लो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Right. My name is Steve Smith. I'm a senior officer in LSP department. My badge number is 46. I'm a senior officer in F2 and Air 1 certified. You are Air 1 certified. Who certified you? Our ex commander of the air. Yes, okay. Our ex commander Shersha. Mr. Shersha. वो तो सबसे बड़े एसओपी ब्रेकर थे, छोड़ो। हाँ, ओके, सो वेयर वर वी? यस, सो यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेन क्वेश्चन पे हम जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेवन रेगुलेशन? Raven regulation. Yes, it's a case law.
like I'll be very honest, मैंने केस लॉ ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा। तुम लोग केस लॉस क्यों नहीं I- पढ़ते हो? मुझे ही नहीं समझ में आता क्यों। चलो ठीक है, एक केस लॉ नहीं पता, बाकी तो पता होंगे। 5th अमेंडमेंट क्या है हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का? 5th Amendment of US Constitution. Basically, in the 5th Amendment of US Constitution, a police of आवाज कट गई। can आवाज आ रही है? हाँ हाँ बताओ। A police officer can use his deadly or lethal force only when someone. हाय tries to राम, कैसे बने तुम सीनियर ऑफिसर स्टीव? कैसे? इस लॉज एंड अमेंडमेंट्स में थोड़ी सी गड़बड़। तुम लोग केस लॉस, तभी तुम लोग कोर्ट केस हारते हो, यही है तुम्हारा, यही मेजर रीजन है। एक काम करो, जी सर। तुम भी डिमोट होते हो अभी ऑफिसर पे, और तुम्हारा टेस्ट 2 दिन बाद होगा, ठीक है? ओके सर। बाकियों का 1 वीक दे रहा हूँ, तुम मेरे पर्सनल फेवरेट हो, तुम्हारा टेस्ट 2 दिन बाद लूंगा। और अगर फकअप किया ऑफिसर रैंक पे रुकोगे। दूसरी बात, एफटीओ रोल भी निकाल दूंगा मैं। ठीक है सर। और अगर अच्छा गया तो? वो हम तब देखेंगे। ओके सर। चलो जाओ। थैंक यू सर। अभी टाइम नहीं है, मैं वरना मैं और मजे लेता। देखिए बातें सुन रहे थे सब। हैकिंग डिवाइस वाला कर दियो, ठीक है? उसको बोली प्रोबेबल कॉज। वो कह रहा है ना प्रोबेबल कॉज क्या होता है, उससे पूछना कि तुम्हें कैसे पता प्रोबेबल कॉज क्या होता है, ऐसे बोलना। सुनाने के बाद है ना। हाँ वो तो बता मेरे को। सो अभी हमारे पास स्टीव गया हमारी तरफ से, कॉर्डल गया और मैवरिक गया। 2 सार्जेंट हमने हटा दिए हैं, एक पार्क रेंजर से हटा दिया अपने, और एक हमने ऑफिसर बना। अरे ट्रे था यार, ट्रे को मजे लेते। थैंक यू फॉर योर सर्विस। एडी को ले सकते हो, लोग आएंगे तो लूंगा ना मैं यार, मैं किसी को टीएम करके थोड़ी ना बुला पाऊंगा यार, तो समझो तुम लोग के लिए मैंने उसका दिया था, एयरवन का दिया था मेरा, सही है। कौन ले रहा था एयरवन? देखो सर, रॉकसर ही कह रहा है कि मुझे सब बात याद मकवाय क्या कह रहा है ये? ट्रे कह रहा है कि मेरे को सबसे ज्यादा सब याद नहीं पूरे पीडी में। हाँ तो व्हाट नेवर सर, ऐसा कह ट्रे, सुनामी के बाद मिलना। मैंने ठीक है, बट मैंने ऐसे बोला भी नहीं था। ठीक, कोई बात। अरे सर मेरा बैच दोगे सर बना के? हाँ आज मैंने सबको बोला ना, अभी नहीं, मैं आज मैंने बोला है ना, तो सबको मिल जाएगा। रात में बैठ के सबके करूंगा। सर मेरा लास्ट वीक ऑफिसर बना है, तो मेरा भी होगा। क्या होगा? क्या होगा ये तो? ये टेस्ट सा। कौन सा टेस्ट? पता नहीं, ये सर कह रहे हैं कि टेस्ट है कोई। किसने का टेस्ट हो रहा है? नहीं है ना, ओके। किसने कहा? नहीं लगा, कोई कह रहा था। अरे पागल है क्या? नहीं सर, you can never trust solo cadets. And यार मेरे को ये बताओ from the morning। हाँ ठीक। यार हम कैजुअल थोड़ा पहन सकते हैं? पहने तो अभी कैजुअल नहीं यार, ऑन ड्यूटी ऐसा करके ऊपर शेरिफ का वो एकदम मस्त पहले हुआ करता था। वो पहले करते थे, लेकिन ये हमारे रेंजर्स लोग हैं ना, वो चड्डी में घूमते थे, चप्पल में आ जाते हैं। चप्पल में आते सर थे। मैं भी आया था सर, वो रियो पार्कर सर थे जो चड्डी में घूम रहे थे पिंक पिंक पहन के। हाँ हम नहीं थे सर। हाँ भाई वो पूरे पिंक बन के घूमते थे। पायलट्स लाइसेंस मिल जाता। 2,50,000 वो है ना एयरएक्स के वहाँ पे। अरे क्या 2,50,000 भैया? अभी हम 1,00,000 क्या? एयरएक्स के ना, उनसे पूछो। एयरएक्स के पार्ट है वो। सैलरी बढ़ा दो सर थोड़ी सी। I'm the best pilot out here. I need a license. एयरवन थोड़ा लेता हूं, तो मैं ट्रेनिंग दूंगा फिर उसके बाद। हाँ इसको ट्रेनिंग करवाओ। अरे आती है ट्रेनिंग, वो टेस्ट है ना सीधा। अरे पहले ट्रेनिंग होगी, हम फिर टेस्ट पे जाएंगे। आप पहले बता रहे तुम्हारे 1,00,000 टेस्ट फीस है तुम्हारे? 1,00,000? हाँ सर प्लेन खरीदना नहीं है, टेस्ट है ना। अरे लेकिन रॉकसर अभी तो 35,000 थी बोल रहे थे। 35,000 ट्रेनिंग फीस है?
अच्छा ट्रेनिंग फीस Yes. लाइसेंस का अलग Yes. मतलब 1,35,000 नहीं लाइसेंस मैं बताता हूँ, आओ बताता हूँ, इधर आओ, ऐसे? अच्छे से समझाता हूँ। ठीक अरे सुनामी आ गई। लग रहा है, हाँ हो गया चलो कोई नहीं, आफ्टर सुना मुझे आफ्टर मीटिंग नहीं बोल लो कोई दिक्कत टेन फोर अभी अच्छा ऐसा क्या बे वो मैम की छोकरी सबको बोल सकता है रॉक्स में, तो ऐसा है क्या? 10-4 अभी। व्हेन डज इट हैपन, हाउ ऑफन? क्या हुआ? पिताजी आके डायरेक्ट प्रमोशन चाहिए भाई। डायरेक्ट प्रमोशन क्या, उसका मैं लूंगा। अभी वो जस्ट प्रमोट हुआ है ना ऑफिसर में, ऑफिसर नहीं सीनियर ऑफिसर में। कुछ टाइम रुको, उसका भी लेंगे हम, उसका भी लेंगे हम, बट नॉट राइट नाउ। I'm waiting for the one who will say all answers. I'm also looking for that. तूने एसओपी पढ़ी है? मैं पढ़ी है भाई। मैं रोज ही पढ़ता हूँ, मैं ही तो हूँ एडिट करने वाला। Please don't say F words. I'm trying my best, Rishabh. I'm really sorry, यार। राजेंद्र के इंतजार है। What upgrade लो? So we're still starting up. अभी तक हो जाना चाहिए बूट, पता नहीं। What happened to छाती सिंह? Nothing, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन बोला, इंक्वायरी चल रही है। जिम्मी रो देगा, ऐसा है क्या? सिर्फ एक पर्सन विल पास टेस्ट एंड दैट पर्सन इज हेड साइड में बैंडी पार्कर। ऐसा है क्या शुरू? भाई एरर 56। आई ऑलवेज हेट दिस एरर। वेट, एग्जिट फ्लैग लगाने दो। जब पिट कर दोगे करो, और रोका किसने तो पिट करने से? हेलो ऐसा हर सिटी में ग्राइंडर एडिटर हो गए फिर आप, ऐसा है क्या? घुस जाओ भाई सर्वर पे। 56। Okay, I think we need to wait for a time. Song name? Song name is Palace. Okay, तब तक till we are connecting हम देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। पॉलिटिक्स तो है, ऐसा है चलो भाई, पॉलिटिक्स तो है। फेस कैम कर रहा है।
ओ भाई Okay, let's follow the left one first. राजेंद्र का अभी प्रमोशन हुआ ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। We went through here. ओ भाई जोशी ऐसा दिखता है क्या? तो कंप्लीट अलग दिखता है। भाई इसको तो फिर भी क्यू में ले लिया, मेरे को तो क्यू में नहीं ले रहा वो। ऑफ टॉपिक आ जा, आता हूँ। हाँ व्हाट अबाउट सीजे कार्लो जॉनसन, तुम कैसे दिखते हो बताओ? मैं कैसा दिखता हूँ तुम्हें देखना? मेरा हॉस्टल देखना है क्या गाइस तुम लोग को? वेट आई कैन शो यू माय हॉस्टल राइट नाउ। वेट मैं लगाता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। दिख रहा है? दिस इज माय फकिंग हॉस्टल गाइस। ओह फक अगेन, मैं फक बोल दिया, सॉरी ब्रज, सॉरी मैन, कंट्रोल नहीं हो रहा। Okay, this is my hostel guys. दिख रहा होगा तुम लोग को अच्छे से। Exit lag use कर ले, I'm not using. No, I'm using exit lag, but मेरे को क्यू में enter नहीं लेने दे रहा हो। मैं exit lag on है मेरा। और यहाँ पीछे की तरफ झुका हुआ है ये तो। अच्छा भाई हो जा। Okay, let's change the region. गांधीनगर ये डिस्क्रिप्शन चेंज कर नए वर्ड्स। हो जा भाई। Are you getting fit in this bed? Yeah. What's the issue with me? Yeah, I'm not that big. पीछे बकेट क्या कर रही है? So भाई नहाने के लिए बकेट होती है ना। हॉस्टल है, होटल नहीं है। See guys, I'm trying my best to connect, but नहीं हो रहा अभी फिलहाल तो। हॉस्टल कहाँ पे है? हॉस्टल इज एट IIT गांधीनगर। हेलो शक्ति, लव फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू मैम। अरे भाई हो जाओ यार। Wait. Go get my coffee. I need my coffee. I need my caffeine. I need my caffeine. Go get my coffee. I need my coffee. Just point over here. For him, please. Just need to know on his way. Come to me. हॉस्टल की याद दिला दी थी VC, ऐसा है क्या? Okay guys, I'm just gonna change my thumbnail जल्दी से। I got a new thumbnail। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। कौन से कॉलेज में हो? I'm in IIT गांधीनगर guys। Gotta grind.
सिटी कार एडिमेशन बहुत अच्छा है। ऐसा है क्या? एक मिनट, लेट मी अपडेट। किधर है? क्या आई गॉट अ न्यू थंबनेल गाइस, सी एंड इट्स अपडेटेड। तो गांधीनगर बहुत दूर नहीं है, नहीं इतना दूर नहीं है, अब हो जाना चाहिए। फक मैन, okay, what the fuck, this is not opening. You're from Gandhinagar, that's nice. Gandhinagar में दारू है क्या? ना, no. Oh, गुजरात is a dry state. कहाँ नहीं है? नेक्स्ट इसको प्रमोशन मिल रहा है? डिपेंडिंग, अभी मैं ऐसे नहीं बता सकता किसको प्रमोशन मिल रहा है, वो ऑब्जर्वेशंस पे होता है। Oh man, गुस्सा। प्रेम को मिलना चाहिए, प्रेम को मिलना चाहिए। Fuck this. थोड़ा वेट करते हैं। अरे मैं फुटबॉल कर मैच के लिए आया था नाइट में। ओह दैट्स नाइस। ब्लैक मोफिया। लीना क्या कर रही है? Are you using college Wi-Fi? No, I'm calling using college LAN. You can either put your whole body and then Okay, कुछ अलग ही चल रहा है। कोई है सर्वर में? Okay, fuck it. Enter all grinder, then you go. I think so. Oh, he is there. 2K likes तो इनसे NH के ब्रो, NH के। कौन था वो? तुमने वैसे लिल डॉट का गाना सुना है गाइस? भाई तब तक इसका गाना ही सुनते हैं, मेरे को पसंद आता है। इसका गाना गा गया, गाना। My homie, हाँ, ride with my homie. Yeah, it's actually good. अरे आया था ना my homie. Yeah man, this one. जब तक हम कनेक्ट हो रहे हैं, सेक्सी है भाई बंदे में। Okay, we are finally connected. Ride with my homie, I be like chillin' and I'm low key. Ride with my homie, I be like feeling fucking lonely. Ride with my homie, ride with my homie, ride with my homie. Nice, मजा आता है I be like chillin' and I'm low key. Yeah,
hard like they know me. They be riding fucking slowly. I be feeling fucking lonely. I be burning like I'm Molly. I be growing up slowly. How do she fucking know me? Tryna get close slowly. She was one and only. I feel like so poor, fetish, ugly. You so clear, fair and lovely. My little dot, why chota dot? So easily and broke me deadly. Losing out my mind. Now I am back on the track. Finally working with my homie. We banging up the game silently. Ride with my homie. How much marks did I got in my GE? I don't remember marks. I remember my rank. So I got like how much was it? I think it was 14.56. Yeah, 1456 was my advanced rank. That was Like chilling and I'm low key. लॉन्ग ड्राइव गाड़ी तेज स्पीडी करती 100 पे चेस टायर मेरे दोनों टेज फिर भी आके कर लो रेस कलम मेरी रुकती नहीं है किसके आगे झुकती नहीं है भटकेगी तो मुक्ति नहीं है दिल की केजर वाले सुना है ये गाना गाना तो है अच्छा याद तेरी बातें सब दर्द था बातों में तब कहती थी कैसे हैं सब ऑल गुड बढ़िया सब टाइम चेंज हो रहा है अब टेस्ट ले रहा है रब सोचती है मरू कब रात में माय होमी I be like chillin' and I'm low key. Ride with my homie. I be like thumbnail तो है अच्छा है ना thumbnail Ride with my homie. Ride with my homie. Ride with my homie. I be like chillin' and I'm low key. इसका दूसरा वाला गाना सुना है Ride with my homie. क्या धर्मत वाला बोल रहा है क्या क्या ले भाई के all good man संजय I'm all good Radeon शराब नेक्स्ट देखो ये बात कर रहे हो कि तुम फिर ऐड भाई तू तो पढ़ाकू निकला मेरे को इसके लिए इफ यू रिमेम्बर गाइस मेरे को SVRP में IIT का छोरा इसके लिए बोला जाता था क्योंकि मेरे को वो चिढ़ाते थे वो लोग बैम्बी से आ जा रे बैम्बी उड़ गया भाई बैम्बी उड़ गया उड़ा दिया ने बैम्बी को ये देखो बैम्बी इज नो मोर वन डे कैरेक्टर था भाई मैं उतना गला खराब नहीं कर सकता उस कैरेक्टर से ओके सफर यहाँ सारे ऐसे कर हंसते रहते सामने हेडफोन बोलता था यार कर या फिर मर जिंदगी में मत डर लिल डी मेरा नाम YouTube मेरा घर स्लो है सफर यहाँ सारे असगर हंसते रहते सामने ये जाते डस कर या फिर मर जिंदगी इमोशन सेरेमनी है मत डर आजा मेरे होमी मेरे घर आके चिल कर सारे बैठे बोले ले भाई मेरा बिल पर ड्रॉप किया टैक्स बोले पैसे ले मिलकर छोटी मोटी नहीं बेटे बड़े बड़े डील कर फिल कर चिल कर लो है टूल कर काम करे दिन पर पैसे मिले गिन कर लोकी हूँ बेटे में थोड़ा सबर कर बंदी की नहीं माँ बाप की कदर कर जीवन में सॉन्ग वॉइस कम कर लाइन से चले बोले सर 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 कोविड सर पर चलो बेटे घर पर उनका है मेला तो चलो बेटे सर पर व्यूज करे सर पर न्यूज करे बड़ पर मालिक के साथ चल फजर कर चल मेरी बात में तू चल कदर कर जीवन है राज तू कम घमंड कर फैंसी ने बेटे यहाँ कुछ तो है गड़बड़ EP की गोली चले से दर्द दर्द भाई मेरे को माय होमी ज्यादा पसंद है इसका उसमें वाइब ज्यादा है पता है हद से ज्यादा वाइब है माय होमी में हेलो फब व्हाट्सअप ऑल गुड मैन स्लो है सफर यहाँ सारे ऐसे कर हंसते रहते सामने ये जाते डस कर या फिर मर जिंदगी में मत डर टिल्लू वर्जन बिचेस सॉन्ग सुना है हाँ सुना है मैंने सुना मैंने इसके ये वाला नहीं सुना था सामने ये जाते डस कर या फिर मर जिंदगी में मत डर न्यू आउटफिट न्यू आउटफिट आई कैन हाउ देखते हैं मत डर भैया आप कौन सा आईडी से फ्रॉम आईडी गाने लगा मैं आजकल व्यूज काम करूं डेली विदाउट एक्सक्यूज पाइप होगा बूम या फोटो डिफ्यूज गाना कर पैनिक विदाउट अब्यूज दे मेकिंग द प्लान लेट अप प्रोड्यूस छेड़ूंगा नहीं ना वो रेड्यूस उड़ेगा तू लेट मी रेड्यूस हेलो क्या हाल है अच्छे हैं सर हम अच्छी बात है आगे ऊपर मीटिंग हो रही है होनी चाहिए आ जाओ बुला आ ही रहे हैं लोग
चलो ट्रेन में थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाती है ना कुछ हाँ लोगों कभी की। कभी आ रहे हैं हाँ आ रहे नहीं, हैं। मेरी भी दिक्कत थी कोई नहीं। सर आप SRU की ट्रायल्स लेते हो? मैं हर कुछ ले सकता हूँ बट मैं लेता नहीं हूँ। अच्छा नाइस टैक्टिक तो। वही तो फिर मतलब आप अपने आप को भी साइन ऑफ दे सकते हो यस या सर्टिफाई कर सकते हो। यस अरे ये थोड़ा एडी सर देखो मैं वहीं से आता हूँ। इज्जत से। कौन एक्स चीफ? तुम चीफ कहाँ बने? एक्स चीफ रेंजर। तुम तो हेड सार्जेंट हो ना? नहीं सर, दिल से एक्स चीफ। भाई हम भी दिल से एक्स सार्जेंट हैं। बोल रहे क्या? चुपचाप जो रैंक दिया है वही रैंक पे बैठे हैं। Yes, we'll wait for other cops. Then we gonna start. 30 पे चालू करेंगे, ठीक है? आने दो उनको। कोई नहीं, आज कोई ना कोई एक और। चलो, I think it's finished. एक चीज कभी-कभी इमेज में Wait. युवा आओ आज मीटिंग तुम लोग आओ। आज तुम्हारी मीटिंग आओ। Let's go. आओ सामने जाओ। What did you say, sir? सामने खड़े हो। Stand in front. Alright. Who allowed you to like bring the sleeve pro over here? No one did. And what should be the punishment for it? I'll go on dispatch duty. That's better. So we have everybody over here? Yep. Okay, try. You can start up the meeting today. I'm not gonna start it. Right. I need few sergeants to come forward if they have any points. Stand next to me. Let's begin with the meeting. Good evening, everybody. So the points we made today are the HR announcement which was made by Brian Walker about the shift. If you are a part of evening shift, then please clock in at that time only. Do not clock in the afternoon shift. That hours will not be counted, and you will be forcibly clocked out from that shift, the afternoon shift. Right. About the raid and the rest of thing, which are SWAT things. Like if you are putting a siege and search warrant, and if it is getting approved, contact the leading SWAT members, Jake Maverick and Smith, because we have a lot of warrants I'm all pending good, about Roger, raid all good. warrants, siege and search warrants. So make sure those are cleared, and let's begin with the new ones which are coming in. Because I see a lot of them are still pending and nobody's approaching the SWAT regarding that. Okay? Acknowledge him, guys. Acknowledge him. Yes, sir. We'll be going for raids today, alright? If anyone of you has any pending warrant, let me know. Hello, serial killer. You can mail him actually, and you can also be the part of SWAT. The reporting officer has approved. If reporting officer's siege and search warrant is approved by the Leo. Sorry, DOJ department. Then you can also be part of the SWAT they are doing. Regarding the situation regarding the 80s which is happening on Radio 1, I guess it is happening too much again. So make sure it is not happened, and do a 311 when you get involved in a case like those. Make sure you have always a partner. Do not go solo, so that he can be of use somehow. So that you keep driving and keep eyes on the suspect's vehicle, and the partner will do 311 requesting for backup on the
different frequency. So that primary frequency, which is 1, which is always not, make sure it is not used for some other things. Okay. Anybody else has any points to be made today? If no one, then I will go. Come here. Yeah, first thing is about the radio etiquettes, which I am seeing is completely fucked up. As I told you, I need radio 1 to be clear, but you guys are still not understanding. So tomorrow, as mentioned, we're just gonna have a meeting on Discord, okay? In which we will be joined with a new dispatcher who will be helping you out in a different way of dispatching. Along with it, Yuva will be assisting him as well. So you need to be, it's better you present over there, else from the next day it will be difficult for you to understand how the new dispatch system is working and all that thing. And if somebody is fucking up, we just gonna take directly actions on him. So it's better not to miss tomorrow's meeting. Okay, next thing is about the this professionalism. That is which I personally feel is being violated too much. Like during the promotion ceremony as well, we are having what we say grenades and all that thing. The person who is like putting up the nails, are you authorized to do that? Like my first question was Putting up what? Smoke grenades and all that stuff, stun grenades. No one's authorized to take any Yeah. of that. So why the Not fuck even they are? squad. Yeah. Why the fuck they are being used during the meetings? Huh? Like you don't know your own SOPs, then trust me, I'm just gonna take SOP exam, all of yours. I don't care what rank you are in. 3 of them are today demoted by myself only, which is Jake Maverick, Steve Smith, and one more guy was there. I think it was Matt Cordell. So unless you know your own SOPs, I don't know how the hell you are in the command team. So better if you fail in today's exam, you will be demoted, and during the next exam, you should be well prepared for it. Yeah, Mr. Prem. सर नीचे एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन चल रहा है 3-4 सिविलियंस हैंडकफ्ड हैं 5-6 उल्टा पीडी के बाहर Okay, we'll do one thing. Ash, you there? Ash Anderson. नहीं है सर No. अच्छा है पीछे बैठा हुआ है सबसे. I guess he's in his mind. Okay, Yuva and नहीं, Steve. he's here, okay. he's here, he's here. hello? Yes, Ash and Yuva, just take care of the situation. What's happening right now? Sure thing. Yep. Right now, go. You both. Okay. About the warrants, which units are looking into this warrants? Because like any of you were allocated just to clear out these warrants. Hello, Maverick. You are not audible. Can't hear you, Maverick, sir. Okay, let it be. Can you hear me? Yep. How many current sergeants we have? Sergeants plus one is Trey. One we have what we say, Hardy and Ash. All okay. Distinguish among yourself which guy you wanna take in. I need all of these today because 2 of the warrants are anyways expiring it today itself. Okay. And one is for like shootout inside MRPD, like. Okay, then go talk to judge and put his account on monitor, man. If that is the case, if that things are seriously, then just do that things. For the shootout in MRPD, we are going to get him, so probably we are going to find him over there. Yeah, okay. One more thing regarding account monitoring. So suppose if a warrant has been there for a very long time and you are not unable to catch that person, you can request judge to put account monitoring. So how the account monitoring system works, so whether that person go to any nearest bank or ATM, the system gives you a location of that exact place where he tried to transact, okay, whether he tried to access his account. So you will get a notification and you can easily go and bust him up over there.
So you need to start working on the account monitoring stuff as well for the like long awaited warrants. Am I clear? Yep. Okay. Yep. Okay, I think that's it from my side. Okay. So I have few more points that I have seen is some of the officers are responding to one situation, and once it gets over, you come back to MRPD, repair your vehicle, and just stay in the MRPD. But you do not respond to 37 calls. They are getting ignored by you guys, and 71 calls also. There are 71 calls, 37 calls. You stay at MRPD, but when the 99 vehicle, I mean, a dispatch call is coming, then you will respond ASAP, like without even hesitating. So don't do that, guys. Respond to 37s also. You will get chased in that things also. Okay. So just avoid ignoring them and the 71s also. So please respond to those calls also. There because they are also important. Okay. Because meth run भी हो रही है and oxy भी ये कर रहे हैं वो लोग. They are doing a lot of things which are illegal. Okay, I just got one more point. So you remember a situation happened in which one of our officer was put allegation for trespassing the area and trying to steal something from some place. Okay, I don't know whether it has been done or not because investigation and inquiry is still going on. But I wanna tell if it would have been happened, I won't tolerate it. Like, it depends on the report which comes. We're just gonna simply take up actions against you. So as being a cop, you have some integrity, you have some professionalism which you need to maintain. So again, I'm saying I have no idea whether it has been done or not. It depends on the report, but in case even if you think or try to do something, just think twice because your line of duty depends on it. Okay, so stop indulging into criminal activities. Sir. Is that fine? Yeah. Yeah. Fine. Okay, perfect. Yeah, try continue. Alright. Yeah, anybody else has any points to be made today? So if you have, please come forward. The podium is free. After this meeting is over, the SWAT guy just stay in the room, right? Okay. Yeah, just one point from again, it was announced yesterday also. So if you are in a reporting, you are not a reporting officer, or if you are the reporting officer, please complete your MW by 24 or 48 hours. If you are not the reporting officer and someone asks you to create one, please change the reporting of. If you are not knowing about the situation, please change the reporting officer in the MDW and in person go and talk them that he was the reporting one and he needs to write about the situation and inform him directly. Don't just change the name and leave it. Otherwise, it happens that after 4 to 5 days when I check, or Yeah, 3 to 4 days when I check it, there is nothing written, and one of you says that there is he wasn't the reporting officer, and the other one says it's like 4 to 5 days. Don't even know my name was written there, and I don't remember the situation now. So when it's not completed, there will be warning given to both of you. It will if it happens again. It was announced yesterday also. I just repeated it. Okay. Take it seriously, guys. This one also. One more thing, if if I'm the reporting officer and my suspect is not pleading guilty, and if a lawyer is coming up and asking for the report of my incident report, and just try to contact me by mail or any other. Just I'm giving an example, okay? Because that report might be incomplete. So just contact the reporting officer and tell him that the lawyer was here to take the report, so that he will get the information and he will complete the report also. Is why, okay? कि वो ऑफिसर को ये ना हो जाए कि what if he has to put some more points in the MDW और वो lawyer को मिल जाएगा और he can't do anything. The officer can't put any more points in that. That is why. Okay, so take care of this also. Please make sure you mail the officer who is reporting the who has made the report and tell him to complete पर depends on the report and लेके IIT that he has कंपाउंड completed it or not. Just inform him that he was the होगा lawyer was ऐसा here to क्या ask धीरू for his भाई? report, That's nice. and he will do the further procedures whatever has to be done. Okay. मेरा पुराना जो कैंपस था लाइक Anybody else IIT मेन कैंपस एस्टैब्लिश होने से पहले विश्वकर्मा का पुराना कैंपस IIT यूज करता था. और इन छाती के कौन जीतेगा? No idea, man. Should we dismiss? Yeah, I think you guys are dismissed. So what do we say? Ash, you come with me. Yes, All sir. other officers can go. एक
4 of 3 minutes. Rex, अरे आईडी दे शुगर आओ बैठो सामने आओ. Yes, sir. So yeah, as a high command are like taking some surveys about what's happening in the PD and all that thing. Being you in the command, can you just give me some update of it and what are the SOPs that are not being followed? The very basic thing is that some officers have lack of professionalism. I Name know, them. like it depends on situation to situation. Like there's some officers, like I've seen them being professional in some situation, but lacking profession in other situations, which is more like lack of composure, as in like dealing with the suspects in cells or something and losing their cool and just fighting with them and anything. कुछ है जो improve हो गया पहले से, but कभी-कभी lack of professionalism फिर भी दिख जाती है, because thing is I कि said even name though them. Abhishek में एक है, Okay. because Abhishek में is like no, I'm not gonna say like he's very rude to everyone, लेकिन कभी-कभार he's like he seems to be like provoking the suspects or something, like उंगली करता है जानबूझ के and everything. कभी-कभी मैंने like ऑफिसर जिमी को भी देखा है थोड़ा सा, कभी Officer Jimmy, like Sergeant Jimmy, हैं? हाँ मतलब not on a like very serious note, हाँ, लेकिन हाँ. कभी-कभी वो मजाक के मूड में करते हैं और सामने वाला बंदा सीरियस हो जाता है, तो उस बेसिस पे तो तुम and, ये like, कहना क्या होता है चाहते हो कि ऑफिसर जिमी को सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता है? ये कहना चाहते हो तुम? नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन सर कहने का मतलब ये है कि वो रहता है कभी-कभी हंसी मजाक के मूड में, एंड सामने वाला कभी-कभी होता है सीरियस मूड में, एंड हंसी मजाक के मूड के चक्कर में ना सामने वाला प्रोवोक हो जाता है. तुम्हें बहुत पता बार मैंने ऐसे देखा कि है ऑफिसर जिमी एक टाइम पे तुम्हारे सीनियर हुआ करते थे. I know, sir. I know that very well. He used to be a trooper. He used to be sergeant in there. He started like the bike department. And He everything. used to be not वो एक ही बार sergeant, हुआ he था used उनके to साथ. be captain. Oh, sorry, captain in the Yes. SSP. Yeah. I'm from Bitska. Okay, मतलब let it be. वो एक ही बार हुआ, लेकिन उनके So साथ. you are Yeah, telling these officers like try to go a little bit, not much, a little bit off SOPs. Okay, what about you? How much Yes, you sir. consider yourself being binded to the current SOPs of SASP? ऐसा है क्या शिखर? Knowingly मैंने कोशिश की है कि कोई मिस्टेक ना हो. हमेशा कोशिश मेरी रहती है कि even if a person is suspect, I treat him properly because he's still a civilian of this city and he needs to be still respected, even though क्योंकि इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, उसके काम अच्छे बुरे होते हैं. And just because a person did a particular crime doesn't mean that he is to be treated very badly or something. Okay. So मैं कोशिश करता हूँ कि like yeah. So I'm here actually to take your SOP exam. So today is your surprise SOP Sure thing. exam. Okay. And if you fail, Sure thing. you will be demoted. Along with it, your command and FTO position will be revoked until we Alright, have sir. your next exam. Okay. If you pass, Sure then thing. yeah, it's well and good that you're doing your job correctly and you know your things accordingly. So चलिए शुरू करते हैं. Introduce me yourself. Good evening. My name is The Ash taxi Anderson. just I'm a saying. sergeant for the Los Santos Police Department. I'm also a part of the command, and I'm a field training officer. You're a I field have training certifications. officer. Yes, sir. I have my certification in Air 1, and I'm still working towards my certification in the pursuit team. Okay, I'm just gonna go in directly to the deep questions. What do you understand by the Raven Regulation Act? So this is my favorite question. This is something that I ask everyone. Yes. So the Raven Regulation Act basically defines situations like house robbery, in which if a person is seen fleeing हाँ, ये away pass from the करेगा, scene, मुझे or पता his है. DNA is ये found pass inside करेगा. the house near the door or outside the house near the door,
and if the person is found like in the house without any proper explanation why he wasn't there in the first place, and like basically there's like multiple evidences, and if these all evidences line नागामोटो up को खुद तो एसओपी आनी the चाहिए पहले. observers with the observation that the officer has gained when responding to a situation of house robbery, then the person can be incriminated based on that. Perfect. Next in question. What is the difference between misdemeanor, infraction, and felony? The misdemeanor infraction basically refers to very small or petty, like breaking of law. For example, vehicular misdemeanors, basically, which are like overspeeding or breaking red light or something, which doesn't have any time, but भाई come with a नेली को तो fine पहले and some एसओपी आनी चाहिए, citation फिर मैं points आगे based upon करूँगा. the infraction, of course. A felony is a big time crime which has a fine and a jail time as well, for which a person is sent to prison and they have parole time and everything. And it is basically something which is a little more serious than the misdemeanor. Okay, what is the difference between arrest and detain? He's a good one, I know. So basically, when a person is detained, he is शादी detained for the purpose of investigation and शादी के interrogation, साथ अच्छा and नहीं he किया should आपने. only be detained for a maximum of कौन शादी? जब हेलो. तक उससे questioning करनी है, उससे ज़्यादा उसको detain करना हाँ, is like not necessary. Plus, secondly, a person is detained only when there is reasonable suspicion, under which we can only question the person. We cannot perform any search and seizure protocols. We can only like question a person, maybe gain some information after questioning him, or we can frisk the person. About arrest, that is when we have a probable cause and proper evidence and facts that incriminate the person, after which we मैंने क्या arrest the किया? person, let him know his Miranda rights, and after Miranda rights, we can go ahead with the protocols of search and seizure, which like to gain further evidences that he's being incriminated for. Okay, we are done. You are good. और कौन है हमारे पास? ट्रेकोल को भेजो अंदर. Thank you, sir. रॉक अबे यार हांस का एसओपी टेस्ट ले ला भाई, बहुत बड़ा सीन हो जाएगा. मैं हाई कमांड्स का टेस्ट ही नहीं ले रहा सर. मैंने कहा कोई हाई कमांड ने हक दिया, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ. मान लो किसी हाई कमांड है और उसने गलती से एक दो आंसर गलत कर दिए. रॉक सर. हाँ बोलो सर. एक्चुअली मेरा सोलो क्रेडिट का एग्जाम हो गया. हाँ. रिटर्न नहीं आ रहा, पर तुम करिए, ड्यूटी भी नहीं कर सकते एक दिन. कौन किसने टेस्ट लिया था तुम्हारा? मैम थी कोई. नाम बताओ. पूछना पड़ेगा सर, नाम तो याद नहीं है एग्जैक्ट. ठीक है, जब पता चल जाए तो बताना, बात करना. आओ ट्रे बैठो. ओके. एज तो मेरी बोला प्रेम, तुम बाहर. गेट आउट सर. अरे ठीक सर, गुस्सा नहीं सर. वो वाला प्रमोशन रह गया और मेरा जो मैंने आपको बचाया था. प्रमोशन चाहिए तुम्हें? नहीं, मजाक, किडिंग कर रहे हैं सर, मजाक. कोई बात नहीं. यस ट्रे. Yes, sir. As said by Maverick, you know everything from SOP. Let's No, test I it did not out. say him. Actually, no. I never had to chat about that. Actually, I'm ready, but yeah. Okay, so it's gonna be a surprise SOP test for you. Okay? Okay. If you fail, you will be demoted to a senior deputy. Along with it, Okay. your FTO plus your command role will be removed. Okay. Is any officer doing code one? Okay, let's start. At what stage when a person, or not when a person, when a cop is allowed to go for a PID procedure? PID procedure. Huh. All right. So if the suspect who is fleeing from us and he been recklessly evading, and if he's running over people which are in a public place, so commanding as me being the commanding इसको पता है भाई, इसको पता है. I'll make sure that, इसको पता है. So I'll make sure the pit is supposed made properly, and I hope there's no traffic coming in, and the weather is clear, and speed is below 80 miles per hour. Okay, what And do you if the chase is understand by going the for too full much time. form of PID?
precision immobilization technique. Precision. It's pursuit immobilization technique. चलो कोई नहीं चलेगा उतना काफी है. Okay. Pursuit? Yes, it's pursuit. P stands for Acha, pursuit. Okay. Do you know the case laws? Fourth Amendment, yes sir. Fifth Amendment, some yes. What about the 7th and the 8th Amendment? Do you know about them? I just had a roll over that. Yeah, what do you know about it? I mean, like थोड़ा सा बस ऐसे देख लिया था पर ऊपर से. देख लिया था कि Not serious. एग्जिस्ट करते हैं 7 से 8 अमेंडमेंट यही ना बराबर. हाँ. कोई नहीं. 4th और 5th अमेंडमेंट क्या है बताओ. Fourth Amendment में बोल देता हूँ मैं. You just need the case laws, right? I'll tell you the titles of the. So basically, Tennessee versus Garner stands for using a deadly force if the suspect is capable of harming or hurting a police officer or a civilian or EMS. So we can use a deadly force, lethal. And Carl versus United States, it stands for warrant purpose. So if you have a probable cause on a vehicle, you can search the vehicle. But in the buildings, the buildings होती है CCTV raid वगैरह, they're stationary. So you need to pull out a warrant from the DOJ because they're stationary, that is why we need to pull out a warrant. And the difference between stationary and the having a probable cause on vehicle, because जैसे कि आपको पता ही है probable cause, we have enough evidence to search the vehicle. That is why we are searching the vehicle without a warrant. For a building, we need a proper evidence because the building is stationary. That is why. Okay, hold on. We'll go to the next question. You know it. Okay. This is gonna be a tricky one. ये आज तक कोई नहीं बता पाया, ना कि हमारे शेरिफ, ना कि हमारे चीफ तो निकम्मे छोड़ दो. नेक्स्ट, ना कि हमारे नाकामोटो. You will know it. What is the difference between embezzlement and money trafficking? Ta-da. Embezzlement? Yes. You mean the money laundering or money trafficking? Difference है दोनों में. Difference बताओ. अच्छा. हाँ. I exactly don't know the word you said. जो भी है आपने बोला अभी. Can't repeat it. Money trafficking is basically, I guess, actually, wait. Let me think about it. Okay. Because I never came across. Don't do anything stupid, okay? But I'll just time to using my brain right now. Yeah, sure. Money Take trafficking. your time. Take your time. Trafficking. I think it is like if a person might be related to drug-related things, and the money which is coming from that might be money trafficking, I guess. हैं? Just, तो वो मैं ड्रग ट्रैफिकिंग का चार्ज नहीं डालूंगा उस पे. हाँ, but I actually don't know, sir. What is money trafficking? You don't know. Okay. We'll go in the next thing. Okay. There are 2 charges. One is attempted murder, and second is manslaughter. What do you understand by those? Okay, attempted murder is like more like intentionally doing it. Slaughter that he basically did not intend to do by person's permission. That is why, sir. Repeat it again. Okay. So the attempted murder, second degree murder, right? Any kind of murder charge I'm saying. कि attempted murder और manslaughter में difference क्या है? Manslaughter, okay. Manslaughter is like कीमा बना देंगे बंदे का, ये होता है या कुछ और? I think slaughter is more than torturing a person. That is what it is. More than torturing a person? You sure? Yeah, the person is being slaughtered, right? If I try to assault my chief, okay, will you, like, if I try to assault my chief with a knife, and will you put me a charge called manslaughter or assault? Slaughter and assault. So what was the first one? Attempted murder, right? Yes. Huh.
Okay. But I need to find out what was his intentions. What was the person's intentions with the knife? So, What was he trying to do? okay, indirectly you don't know the meaning of manslaughter. Let it be. Okay. What do you understand by HUT? HUT. Yes. Held until trial. Yes. How and on what procedure we go with HUT charges? There are a few charges like attempted murder and other serious crimes. That is why, sir. I think there's no Hmm. limit for UPI Ride-along. Okay, we are done with your examination. Okay. So, Well, when are the results Trey, coming out? it's now. Yes. Right now, Okay. right away. I'm not taking out your command role, I'm not taking out your FTO role, but for a time being, you are being demoted to a sergeant. एक बार penal codes को पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है? Okay. And we just gonna have your test again in next 2 days. And if you Alright. pass, you will be back at your position. Okay. So that means I will not get the new batch also, I guess. Yeah, you won't get your new batch. You will be continuing as a sergeant for now on, but your command and FTO role will be there. But you need to work on your penal codes. Alright. So where Yes. did I get wrong so that I can have a work on that? Embezzlement, manslaughter, and all that stuff. You don't know Alright, what cool, is the sir. actual difference, so you need to know. Okay. Okay. I will, sir. Yes. Tell me about it. Okay. Thank you very You much. can go. Ding, ding, ding. Dispatch to Aaron Sage. ऐसा है क्या शिवम? मेरे को इन आरपी नहीं पता कि डिमोट करना है. और कौन है? Do we have any rangers today? Rex is Eddie, on duty, but call Eddie, bro. Tell him to join me at first floor briefing room. Is he? Yes. He just came on duty. Yes, call him, please. अरे है ना अभिषेक, वो करके गया ना, क्या नाम है हमारा चिरकुट एश एंडरसन. धरिंदर ओके बराबर भी जो है. कल पेश राने रहा हूँ. अच्छा Eddie Brock. एडी पक्का डिवोट. आपको कौन फेल कर सकता है? मेरे को नाकामोटो फेल कर सकता है, बट नाकामोटो को Captain उसके लिए Rock? एसओपी पढ़नी पड़ेगी. Trooper Rock. यस. Currently, there's no units doing Code 1. Can I get on Solo Cadet and do it, or should I wait? Let Eddie come, then I will decide. Alright. Yes. Stay tacky, fuck her drink and make me make headache. I'm in her drawers. Move like ATV, like Maybelline. You see no fucking flaws. AOC, they should make me ZZZZ. Me pay a fee. ATM not speaking for me. बोले सर हाँ बोलो. कुछ खाने के लिए मिल सकता है? पीने के लिए बताओ. सही है, दे दो, कुछ भी दे दो. दोनों खाली है. देता हूँ. दोनों खाली है. और क्या, पेट पूरा खाली है सर ये मेरा. लो दे दिया. फुल भूख उठा लग लो. रही है. फुल देखो सोडा बड़ा है. स्माइल भाई की फोटो. ये रॉकी बोलने की स्टाइल मूवी डायलॉग वाली क्यों है आज? अरे बकचोदी कर रहे. एग्जाम लो, मजा आ रहा है सुनने में. सुन लेना. मजे लेने आए हो तुम ड्यूटी पे? ड्यूटी करने तो जाने को तैयार हूँ. जाओ ड्यूटी पे. पक्का. हाँ, रैंक जाओ. क्या होगी? सो अभी कैडेट. कैडेट ही है, किसी के साथ चले जाओ. बोलना रॉक ने बोला है. आओ बैठो.
मिस्टर रेडी? नेली? नेली हेलो। अरे मुंह What do से you mean by निकल, नेली? अरे मुंह हाँ से बोलो क्या निकल हुआ? गया। आओ बैठो बैठो। अरे सर मैं बहुत खुश हूँ आज सर। सर देखो मूड का ऐसे मत करना सर, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। आओ बैठो बैठो। है वसी। यार लग ही रहा है यार मेरे को यार। यस, सो लेट्स गो। किस कहाँ पे? यस चीफ रेंजर। एक्स चीफ। एक्स कब बन गए तुम? सर कल सर वो आया सर, क्या नाम है उसको उसका? फायर कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, फिर तो सर स्लॉट खुल गया सर। ओके सर Yes. बताओ। यस चीफ रेंजर। जी सर बताइए सर। हाउस रेंजर डिपार्टमेंट गोइंग ऑन? एक नंबर सर, मेरे राज्य में एक नंबर चल रहा है। फुल एक्टिव है सर डिपार्टमेंट। फुल एक्टिव मछलियाँ पकड़ डिपार्टमेंट रहे है। हैं। हाँ हाँ। हाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं। हंटिंग का थोड़ा सीन है, हंटिंग का बस थोड़ा इश्यू हो रहा है मेरे हिसाब से। हंटिंग का थोड़ा इश्यू है, बाकी तो सही है। हाँ हंटिंग लाइक पकड़ने में थोड़ा मुश्किल है। लाइक 71 की कॉल आती है ना, आज तो पता देखना तुम यहाँ पड़ता है। क्यों आए हो? कॉर्डिल ने बताया ही क्यों? होगा। तुम्हारा नहीं आज नहीं बताया एसओपी सर। एग्जाम है? है। यस। अच्छा ठीक है पूछ लो। और कॉर्डिल का हो चुका, तुम्हारी बारी। पूछो पूछो। ओके लेट मी। सो अभी करंट रैंक क्या है तुम्हारी? हेड सार्जेंट। हेड सार्जेंट। हम्म। सो मिस्टर सार्जेंट। जी सर। मतलब हेड सार्जेंट, सॉरी। अभी अगर आप इस परीक्षा में, वैसे सर मेरे साथ चीटिंग हुई है। इस परीक्षा में आप अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे तो आप वापस सार्जेंट की कुर्सी पे बैठेंगे। ठीक है डन। एंड आपसे हेड सार्जेंट का पद छीन लिया जाएगा फॉर अ टाइम भी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और 2 दिन बाद वापस से आपकी परीक्षा होगी। और अरे यार ये गलत है यार। अगर फेल होते हैं तब अच्छा फिर ठीक है। I believe in you. I believe in Ranger Department. I believe in Chief Ranger. I अरे believe सर, in Eddie. अरे सर खुश हूँ मैं सर, बट ऐसा पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, बहुत टाइम हो गया। पढ़ाई नहीं किया? तुम्हारा रोज का काम है भाई जो मैं पूछूंगा। अच्छा ठीक है पूछो। Let's start. Introduce yourself to me. सर आई एम चीफ ऑफ रेंजर्स एडी ब्रॉक। और क्या इससे ज्यादा क्या बताऊं सर? आप जानते हो सर मेरे को सर, अंदर से जानते हो, अंदर से बाहर से हर जगह से जानते हो सर। Chief इंट्रोडक्शन of थोड़ी है। Rangers. और Then who the fuck is Lieutenant Ocean? भाई फिर फक बोल अरे वो तो सर अपना क्या नाम है, गोबर, आई मीन ओवरवॉच। He's the Overwatch. Yes. And when Chief of Ranger rank was introduced? सर मैंने खुद बनाई ले ली। तुमने खुद बनाई और ले ली? और क्या? Without any permissions? हाँ अरे सर मतलब ऐसे ही बुलाता हूँ अपने आप को, ऐसा टाइटल दे दे सर, समझ रहे हो? अच्छा अपने आप को बुलाते हो तो मतलब कोई रैंक नहीं है? हाँ सर नहीं कोई रैंक नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा फ्यूचर में देखता हूँ अपने आप को मैं। अच्छा तुम फ्यूचर में देखते हो अपने आप को? और क्या सर, टाइटल देता हूँ सर अपने आप को, बराबर। खुश रहता हूँ सर। सर वो नहीं बोलते दिल से रेडिएंट, वैसा सर। दिल से रेडिएंट। यस। ओके सो मिस्टर चीफ ऑफ रेंजर। जी सर। हर रेंजर से सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनलिज्म? सर वो तो डिक्शनरी में है नहीं मेरी। क्या बोला? वापस से बोलना, मैंने सुना नहीं। सर डिक्शनरी में सर प्रोफेशनलिज्म थोड़ा है मतलब 25% है। तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो? रेंजर्स। सारे डिपार्टमेंट की एक ही एसओपी होती है मेरे ख्याल से। हाँ सबसे नहीं, पहला मेरी अलग है। तुम्हारी अलग है।
हाँ तुम्हारी एसओपी अलग है, ठीक है, तो लेकिन हाँ हाँ एक कॉमन एसओपी है सबकी, हाँ हाँ उस पे सबसे पहला हेडिंग क्या होता है? प्रोफेशनलिज्म। हेड और वो तो तुम्हारी डिक्शनरी में ही नहीं है, तो तुम पीडी में क्या कर रहे हो, मेरे को ये बताओगे? सर वो आपको पता सर, मेरे को क्या? मेरे को पता, मेरे को नहीं पता था ना, तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है आज तक, अभी तुमने बताया मेरे को। हेडिंग सर देखो, हाँ सर सबके सामने प्रोफेशनलिज्म, वैसे दिल से देसी हूँ सर, ऐसा रेंजर हूँ ना सर, हाँ हाँ, ऐसा थोड़ा जंगली टाइप आदमी हूँ, इसलिए सर जंगल में घूम घूम के ऐसा। चलो ठीक है, तुमने कहा 25% है, चलो 25% में समझते ओके क्या तुम ओके प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? सर सीनियर्स की इज्जत करना, हाँ, अपना बाहर वाले लोगों के सामने एकदम ऐसा कॉप बन के रहना सर, समझ तो रहे हो? अब तुम कॉप हाँ नहीं सर हो? बताइए सर। नहीं हूँ कॉप। हाँ तो अच्छा, तो ठीक है ठीक है। हाँ मतलब ऐसा मत एलएसपीडी के ऐसे एकदम बन के रहना। हाँ सर बताइए क्यों, सर, तुम क्या दिक्कत है वो एलएसपीडी सर? और रेंजर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या प्रोफेशनलिज्म के बीच में? तुम ये कहना नहीं चाह सर, रहे हो? थोड़ा मैं थोड़ा सा देसी हूँ ना सर, इसलिए। अच्छा देसी हो, तुम हाँ देसी कैसे हो एडी ब्रॉक? चलो ठीक है, नाम हाँ में सर। हो सकता है, क्या ही बोलूँ। हाँ 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 हाँ, चलिए ठीक है। आप हम्म, प्रोफेशनलिज्म तो है नहीं रेंजर्स डिपार्टमेंट में, और स्पेशली आप तो हाँ हाँ महान है। हाँ ओके, हाँ। विच यूनिट्स, आपका पहला सवाल आपकी तरफ आते हुए, विच कितने रुपए के यूनिट्स, लिए? हेड सार्जेंट के लिए, अच्छा अच्छा, यस, विच जी यूनिट्स जी बोलिए। आर ऑथराइज्ड हम्म टू टेक आउट stun grenades, smoking grenades, and SWAT equipments? SWOT, Are you और a क्या? member of SWAT? या And at what time they are being used? ओनली इन व्हाट यू से लाइक, जो पहले से अगर प्रॉपर प्लान्स होते हैं ना, जैसे पता है हमको कि कोडेड होने वाला है या फिर कहीं पे कैंप करके लोग बैठे, तभी यूज होता है। तभी और एक यूज ही होता यूज है, होता है ओनली। एक हाँ ही और यूज एक ही होता यूज है। होता है। You या mean in planned situations? यस। So why the fuck it was used in हम्म। PD promotion ceremony? अरे सर वो तो मैं सर बोला ना सर, No 25% प्रोफेशनलिज्म। professionalism, वही 25%। हाँ सर। एडी सर देखो सर, एक बात बताओ सर, आप मैं हाँ, आपसे एक चीज पूछता हूँ सर। आपने देखा लोगों को मीटिंग में मेरा यहाँ इंटरव्यू नहीं कैसे हो रहा है, बुझे बुझे से, तुम्हारा नहीं इंटरव्यू नहीं हो मैं रहा आपको, है। नहीं नहीं मैं नहीं आपको जरूरत बताता हूँ नहीं है सर। पूछने अरे की, मैं नहीं 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 जरूरत एक चीज मैं है, बता रहा हूँ। नहीं अच्छा सुनना अच्छा मेरे को। ठीक है, ओके सर, ओके सर, यस, आज मैं पूछूंगा और तुम्हें बस आंसर करना है, और कुछ नहीं। ओके सर, ओके यस, सर। नेक्स्ट इन थिंग, केस लॉज आते ओके हैं। बताइए। हल्के हल्के आते हैं। फिफ्थ अमेंडमेंट क्या है? सर्च एंड सीजर, क्या है? सर्च एंड सीजर वाला है, गेस आई गेस। यू गेस, चलो बताओ क्या है सच यस। से। अरे बेसिकली अगर अपने पास व्हाट यू से लाइक, अगर प्रोबेबल कॉज है किसी की व्हाट यू से प्रॉपर्टी को सीज करने का, अगर प्रोबेबल कॉज है तो हम सीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं व्हाट यू से किसी 13A की कॉल पे गया, 13A नहीं 31A की कॉल पे गया, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, वहाँ पे अगर घर में घुसा मैं, अगर वहाँ पे बॉडी है, डेड बॉडी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वो घर को सीज करूँगा। बिल्कुल ठीक है, ये फिफ्थ यस। अमेंडमेंट है हमारा। ऐसा मैं नहीं, मैं हाँ, पता नहीं, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। तुम भी नहीं बताया, अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताया। ओके सर, डील डन। तुम ही नहीं बताया मेरे को। बैक टू सार्जेंट, लेट्स गो। यस, सो लेट मी बी क्लियर, तुम्हारे हाँ हालात बताइए। देखते देखते मुझे हाँ तुम हाँ मैट कॉडल की कैटेगरी में लग रहे हो अभी। ओके सर। मुझे नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें सीधे सार्जेंट में डालूं, अच्छा क्योंकि फिर। तुम्हारी डिक्शनरी में तो है ही नहीं शब्द। हाँ रुको तुम्हारे लिए नीचे डिक्शनरी लेके आता हूँ, नीचे से पहले ओके नई सर, डिक्शनरी। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंग्लिश डिक्शनरी लेके आएंगे इनके लिए। All good, all good.
जॉइन पीडी मीटिंग ओके वाह I'ma meditate it out like it is what it is. I got problems now that the liquor don't fix. Yeah, fuck what happened then and the shit that's coming next. एक मिनट My head on myself like it is what it is. ओ भाई और इसका थोड़ा ट्रांसफर लेटर है सर ट्रांसफर लेटर मिलेगी यस लेट्स गो अब इसको हम करेंगे ट्रांसफर नोट बना एंड उसमें प्रोफेशनल की डेफिनेशन पेश कर दे इसको बोलना कभी भी सर्च करूंगा पास से हेलो Oh, that's nice. Yes, Mr. Eddie. जी सर आपके रेंजर्स में तो प्रोफेशनलिज्म है नहीं and since you were the leading rangers yes sir I am transferring you back to LSPD yes वहां पर आपको अच्छे से आपका ट्रांसफर लेटर मैं आपको दे देता हूँ थोड़ी देर में यू आर बीइंग ट्रांसफर्ड बैक टू LSPD ठीक है एंड वहां पर आपको प्रोफेशनलिज्म की 25 से 100% डेफिनेशन सिखाई जाएगी अंडर सुपरविजन ऑफ आवर स्पेशल चीफ हांस चीफ माइकल हांस आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाएंगे वो प्रोफेशनलिज्म के एसओपी नहीं वो प्रोफेशनलिज्म के सबसे बड़े ज्ञानी हैं आपको वो बताएंगे ओके यस सो यू विल बी वर्किंग अंडर हिम जिस दिन आप प्रोफेशनलिज्म सीख जाएंगे यू विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू पाक रेंजर्स सर ये तो चीटिंग कर दी यार तुम यार मैं खुश था यार बहुत यार बहुत ज्यादा खुश था मैं For now, you are being demoted to a sergeant and being transferred to LSPD till you learn the meaning of professionalism. अरे यार Yes. मैं चला ऑफ ड्यूटी यार ऑफ ड्यूटी जाओ चीटिंग कर दी भाई यार चीटिंग कर दी इतना खुश था मैं बहुत खुश था भाई चीटिंग कर दी भाई क्या कह रहे हो हो गया ना हाँ ऑफ ड्यूटी नहीं जाना है जाओ ड्यूटी पे जाओ और यूनिफॉर्म चेंज करो अरे यार यूनिफॉर्म भी करे यार LSPD आओ जिमी से पूछो जिमी बताएगा LSPD यूनिफॉर्म क्या हो गया अरे जिमी जरा इनकी LSPD यूनिफॉर्म बताना आज इनको ट्रांसफर कर दिया मैंने LSPD में क्यों ये तो BCSO में था ना नहीं पार्क रेंजर्स में था हेलो एक मिनट अरे हाँ मतलब वही पार्क रेंजर में तो क्या हो गया You need to join the PD meeting. नहीं तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा यहाँ पे आ रहा हूँ वो बंद करना पड़ेगा डाशिया नहीं you can but the way the points have been getting conveyed though I don't think those are correct. I'm coming yeah अरे वो कुछ बात करनी थी जरा इधर एक बार पीडी मीटिंग हो जाए उसके बाद बात करते हैं अर्जेंटली अरे नहीं मतलब बस तुम्हें वो बता देना है कि एक्चुअली क्या हो गया था ना मैं परसों था मेरे पास मेरे पापा आए थे वो कंप्लेन लेकर के स्वाति सिंह की तो क्या बोलते हैं उन्होंने मेरे को आके कंप्लेन करा था कि उन्होंने उसमें से आके सामान ले लिया करके कुछ 10 बर्गर ले लिए कुछ 5 कुछ हाँ वो कंप्लेंट आया देख रहा था एंड आया अभी डिसबैंड हो गया तो वो डीओजे देख रहा है व्हाट यप आया डिसबैंड हो गया क्या क्यों आप कुछ तो हुआ है और वो अभी डीओजे हैंडल कर रहा है केस यप
कर रहा है। ठीक है कोई सीन मैं जरा नहीं। मीटिंग मेरा ज्वाइन कोई कर रहा काम हूँ। नहीं है ना अभी? नहीं अभी नहीं बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। Hello. Yeah, what angle? Yeah, should I mute my stream or can I go No. ahead? It's fine. Chill. Yeah, what happened? I just received it. It's sort of a training for a particular situation. Yep, Okay. yeah. Sort of a, what do you say, back and forth feedback training. Right. So now anybody specify, especially the non-command, the senior officer, deputy, senior deputy. I want to know, anyone, please tell me how you would respond to the drug call. I want to know, anyone. Shall I answer? नहीं राणा सर, आप नहीं, आप सर एक्सपीरियंस्ड हैं। मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कॉपर आरपी का। Make it Phoenix Fernandez, उसको वो पता है यहाँ पर वो। Anyone who doesn't have much experience of cop RP. बेबी गुप्ता बताना जरा, टेल मी। ड्रग सेल पे ना? और यू ओनली रिस्पॉन्ड टू द चेजेस? नहीं, ड्रग सेल पे देखो, जाते हैं सबसे पहले तो अगर वहां पर दूर से सिचुएशन देखते, वही जो बताया, जो बेसिक सब लोग फॉलो कर रहे थे, तो वही एविडेंस कलेक्ट करते हैं। फिर अगर हमें लगता है कि कोई बेच रहा है और वहां पर भी सस्पिशन एक्टिविटी आ रही है और कोई दिखता है, तो उसकी सबसे पहले फोटो खींचते ताकि कुछ रहे दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसको पुल ओवर करते, या वो भागने की कोशिश करता है या फिर जाता है कहीं, तो उसको रोकते हैं, फिर उससे बात करते हैं। ठीक है, ये गाड़ी किसकी है, या जिससे ड्रग निकाल रहे थे, या फिर क्या कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग प्रोबेबल कॉज नहीं तो रीजनेबल सस्पिशन पे फ्रिस्क करते हैं। सिर्फ अगर बल्ज मिलता है तो आगे करते हैं सर्च वगैरह। फ्रिस्क का मतलब क्या है? बल्ज का मतलब क्या है? टटोला मतलब जेब है उसकी। हंस, सॉरी टू इंटरप्ट, ये स्ट्रीम कर सकते हैं क्या? हाँ अलाउड है, मैंने लिखा हुआ वहाँ पे, स्ट्रीमिंग इज अलाउड। अरे वो तो मेरे को एक बात बता, टेल मी वन थिंग, what do you mean by frisk? बेबी गुप्ता, अक्षत। जेबे टटोलना मतलब जैसे हाथ रखना ऊपर, जैसे सिक्योरिटी में रहता है। ऊपर से। So you found a bulge on somebody, right? हाँ. You get a message like your character touched the other character, it frisked it, and it found a bulge. Does that mean that he has something illegal? मतलब he has something illegal or he has something to not illegal, I mean कुछ उसके पास ऐसा है जो मेटल का है, या पोक कर सकता है, या फिर इलीगल जरूरी नहीं है क्योंकि नाइफ भी हो सकता है उसके पास। So how can you confirm that it's a drug? वो तो वैसा, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन पड़ी नहीं, क्योंकि हमेशा बंदे भाग ही जाते हैं मेरे सामने, तो उसका आइडिया नहीं है हमें। जब तक पहुंचो बंदों पे तो वो भागने शुरू कर देते, तो वो अपने आप ही सस्पिशन में आ जाता है। You haven't had any वेट कर जाते हैं। वेलकम टू एलएसपीडी मिस्टर Who is this? Not Trey. Coco, tell me now, like how you deal with the drug call? Coco, are you there? You want me to tell you how I do it? Because I'm kind of yeah. Leave it. First, I take pictures, a lot of pictures. I post them in markshot evidence, and then before I even make a move, I call 77s. I make sure I call someone who's experienced, and then what I go is we approach the person, and I actually start questioning him first, because then is. A lot of the times with these 37 calls, they actually set up good RP scenarios where I let them go. So they're handing out some milkshakes, they're doing charity work, they're doing this and that. And if they give me the items, well, I don't check them, I don't frisk them yet, because if their story matches, they have a good story, they're good to go. Like, I haven't actually seen what they're given, and so I don't actually have any probable cause to detain to arrest them or anything. So I just go with that. If it turns into a 1080, yes, let dispatcher be turned into a 1080. And if it doesn't, and I know for sure he's selling drugs and his story doesn't match, I honestly just try to corner him. I check his vehicle. Is it stolen? I actually try to find some reason to not really make an arrest, but to detain him and then further question him. And we request the K9 unit. If the vehicle is flagged, we proceed with a Felony stop, request the K9 unit. But the thing is, I never actually instantly jump the gun and frisk them. I just first you want to make sure you know who they are, get their identity, because half the time whenever they see a cop car, they just try to run away. So if you go and just talk to them first, that's what I do. I try to simmer down before we escalate the situation, turn into a shootout. Just try to figure out, maybe they're trying to actually create a cool RP scenario, maybe, because at the end of the day, it's an RP server. It's not W chasing. You want to make sure they're not selling drugs. That's true. You want to stop them from selling drugs. But if their story is good enough,
Honestly, you just gotta take the L and let it go. That's what I do. And if they are selling drugs, then I ask them kindly, hey, can I Let's say, search your let's say vehicle? if, This and that. let's say if I am selling drugs, right? Yeah. And you Accept your respond. man. Sorry. No, ignore me. Yeah, you respond to me, and you check my ID and everything. I give some Accept excuse, him. very No, good he's excuse, from and you US leave. only. Second time you get the same area, same suspicious call. What do you do with me? I'm gonna come back. I'm gonna dispatch no. Are I'm you gonna on the request meeting? 77s, and then we're gonna, I'm gonna come over and नहीं talk to you, and I'm मीटिंग gonna खत्म actually मीटिंग पहले अटेंड कर लो उसके बाद जाना maybe जो भी ask you, inquire more details. And not if the story it doesn't start matching up, then I'm gonna request from the to India time zone. I'm gonna actually request to further inspect you. Maybe request the K9 units. I just want to make sure that you're not selling any drugs. So we'll do it the professional way. Request the K9 units. If there's no K9 units available, honestly, I don't want to go as far as to like frisk in and search it, because I don't really have any. I don't have any. Yes, there's suspicious calls, but there's you gotta keep it realistic. There's a lot of civilians in the area. Yes, you've been there twice, but realistically, we want everyone to have K9 units. Not everyone, but there'll always be a K9. So एक let बात request सही a है. K9 unit. No, he's And good, then he's the K9 unit comes, and if it senses something, then I'm gonna ask permission to actually, I'm gonna ask you why. Well, first of all, I'm gonna question you about why the K9 is smelling something, and then I'm gonna ask permission to search the vehicle and search you. How And long proceed. And how long you been doing cop RP? Couple weeks. Never done cop RP before. No. This guy knows Yeah, more. a little bit. This guy knows more than the people over here. That is exactly okay. So here's the thing. From now on, I'm setting up some thumb rules. Thumb rules means some in RP on situation rules. These are not like hard and fast rules. First of all, you have a K9. So I'm gonna go through it ABCD, right? Go through basic scratch. Join my stream. Okay. For the Canine Handlers. Okay, especially. Now the basic scratch of cop RP, every single situation is based upon two things: reasonable suspicion and probable cause. This might sound like a lecture, and I didn't want to do it, but I'm forced to do it. Trust me, because I've been seeing a lot of fuck ups happening. So reasonable suspicion is when the same example, the drug call example, you get a drug call, you go to an area and you see somebody, spot somebody for the first time handing out stuff and all that, talk to people, right? And he is like, you start questioning them, you start taking an ID, positive ID check on them, and that's it. Hello. You ask them, what are you doing there? exactly blah blah happened? blah and all that things. That's it. I don't know. You Like he cannot was, मेरे को detain लगा कि like somebody he's under gonna like reasonable limit on suspicion. what is a K9. So that's Remember why I that, told you to everyone. join. You But just afterwards cannot. the topic changed and it went You somewhere cannot else. frisk So them, now it's search going the correct them, way. or Nothing else. I'll anything, update you if someone goes right? like And the next thing if comes, something let's is say gonna block that the way. person is, yeah. you know, what do you say? Like, he After was like, questioning you're you, not use your supposed to go communication directly skills and on what to them. As a cop RP player, you should have very good sniff communication them. skills, according to my I was like, perspective. okay. You फिर start मैंने using पूरा your बात सुना, I was communication like, okay, skills if cool. he's Then the like making topic shitty he excuses changed which the are topic. not It went matching somewhere up, else. I was like, okay, which cool, are no not problem. there, you know, which Let's see which what he wants doesn't to make convey. sense at That's the end I of the called day, you last time because right? I got pissed and I left. And I So really don't want that thing happening again. That's why I called you. turns into a probable cause. Now there is a second thumb rule which we all should follow, and you all will follow, is that that person is continuously second time or third time seen in that same area handing out stuff. Then it becomes a probable cause. And then you can detain the person, frisk them up, search them up. But that should be the last thing to do. That should not be the first thing to do. Now people are doing that. Like the first thing they are doing is that Can we see going answer? directly going, gun pointing, cuffing, that's it, boom, the end. You don't know what he is handing over. He's hiding it. The character is hiding it. Remember that from next time. It is not always drugs. Maybe he's handing out some other stuff. Maybe he's making an RP out of it. Now server mechanics says that with that emote only drugs can be handed over, but that is like OC information.
That is metagaming. Okay, so now comes the canine handlers thing. Now what happens is, let's say this is a drug call area. Now we have an option to use the canine. So we look around. What you have to do, you have to go to the area, look around. If you don't see anybody, you take out your canine and you tell them to track. Now there is a confusion among this regarding this, right? The first and biggest confusion regarding the track option of canines is that people believe that the track option is that canine goes directly to the drug seller. It's not that. Canine goes to the person. It is going to the drug seller, that is server mechanics, but you don't have to consider that. You have to consider that it is going to a separate person, a different person. You don't have to directly go and tell them, okay sir, my canine, I told him to track, and it directly came to you. Yeah, what? Just a thing, there are two specific things when you go to your canine na, so suppose पहला होता है कि just to track a person and different just to sniff someone around. So there are two different things. So अगर कोई sniff वाला directly कर रहा है then yeah they are misusing the canine, but they can use normal वो कर सकते हैं कि yeah just find a person who is around. तो वो चीज़ है, वो ध्यान, वो इनको समझना होना चाहिए. वही बोल रहा हूँ ना. The canine is not tracking for somebody who is selling drugs. The canine is tracking for the people around in the area. That's it. It is doing that only, nothing else. Okay, that you have to remember. Now you have come up to an area, you have seen nobody is there, you told somebody that there is somebody, you told the canine to track and it found somebody, and somebody is standing there. Okay, so what you have to do, you don't have to go and directly say that, okay sir, my canine tracked you and you have drugs. No, you have to talk to them simply. What are you doing here? What's your name? If they're wearing a mask, tell them to remove their mask. Okay, look for signs. Let's say the person refuses to show his identity, but you have the proper right to check their identity. Remember that, because he's coming under reasonable suspicion. But if he's like acting sus, which means he's not removing mask, he's not showing his identity, ask him why. And if it doesn't have a very good reason means a very creative RP reason, it will convert into from reasonable suspicion to probable cause immediately. Okay, so the next thing is that, let's say the person complies, he's like acting and telling you, okay, I'm doing this and that, blah blah blah. You can directly tell them, okay sir, I've been getting a lot of suspicious calls from here, like it would be very good if you clear out the area. Hans, I'm really sorry to cut you in between. I think can you just repeat it again? Because now you made me confused for some of the things. So can you repeat the canine procedures? I'll repeat that. You have to reach somewhere at the reasonable suspicion call. Point 1. Step 2, you have to check that if there is somebody, you see somebody around the area. Step 3, if you don't, you take out your canine, you tell it to track for people. It goes track. Now that step, point number 4. No, it's not this one. The starting one, like the first thing which you were telling about the 37, how cop goes, वो वाला part में कह रहा हूँ. मतलब tracking वाला ना? No, not the. Ignore the canine part. Before that, if somebody is there, like अगर कोई है and canine is not there, वो वाला part एक बार मेरे को बता क्या बोला था? For that part. हाँ वो. For that part is वो तो अभी आया ही नहीं. That part is not even here. I'm covering the canine part first. Okay, just continue. मैं बता. I'm covering the canine part first. Just continue. Okay, you take out your canine, you tell it to track, or you request for canine. Okay, you request for canine, you tell it to track, it tracks for somebody, then you go to that person, you talk to them. If they're found for the first time over there, you check their ID and you look for points. In that, you talk to them, you start questioning them, and you have the full right to do that, by the way. If somebody tells you that no, I refuse to, then it will automatically convert into a probable cause. Okay, if they fail to comply with that. But remember, you don't have the right to cuff them, search them, or frisk them.
Remember that. Okay, under reasonable suspicion. Don't directly go. Even if you seen somebody for the first time, you are going there and you saw somebody handing over something, you ask them that what are you handing out, blah blah blah, and everything. You play it smartly. Don't go by the book. Be creative. Play it smartly. That I saw you handing something. What was it? Blah blah blah, and all that. Okay, you start playing smart, and if the person is complying and giving a very good RP, I don't think that you should have a reason to arrest them or do something. If they don't have a very good reason, it's okay. It's first time. Tell them, okay sir, I'm warning you that we are getting a lot of complaints from this area. You should clear out. But if I found you here again, like handing out some stuff, then I will have to frisk you and search you up. Sir, एक doubt है मेरे को. I'll take the doubts. Wait. Okay, Hans, I have a conflict on this thing with you. See, if there is no canine, I see a person handing something. Okay, one time is fine. ठीक है, I'm just waiting. I'm just on a rooftop. मेरे को एक बार कॉल आई, मेरे को बंदा नहीं मिला. मैं रूफटॉप पे वेट कर रहा हूँ, वापस सेम ड्रग कॉल आई उसी स्पेसिफिक बंदे से. एंड नाउ इफ यू आर सेइंग नॉट टू डिटेन दैट गाय ऑन द बेसिस ऑफ I've not come on the second time yet. I'm still on the first time. No, even on the first, no, you are not understanding my point still. That is something else. Yeah, so for that I'm saying कि पहली बार मैंने देखा ही नहीं बंदा है. I have to cover that point. Yeah, thank you for reminding me that as well. भूल गया था मैं, I forgot. Okay, till now everything is clear. Whatever I said till now, because I'm gonna discuss the other point. Yeah, Gautam. हाँ सर, so like हम जब भी 37 पे रिस्पॉन्ड करते हैं, so एक ऑफिसर बात करता है एंड बाकी के एविडेंस लेता है. so जो एविडेंस जब भी ड्रग सेल्स होता है तो उधर लाइक वीड के बैग्स या ऐसा कुछ का फॉरेंसिक होता है वहां पर. तो वो एविडेंस यूज करके हम डिटेन या अरेस्ट नहीं कर सकते उसको. फॉरेंसिक्स होता है मतलब क्या होता है? मतलब मैं बताता हूँ. गौतम मैं बताता हूँ. हंस वो हुआ क्या था एक दिन कि आई वेंट टू पलेटो, वहाँ पे एक 37 कॉल था. दैट गाय हैड 89 वीड बैगेज. तो बेसिकली सर्वर मैकेनिक्स पे दिखाता नहीं है कि वीड बैगेज या नहीं, बस उस पे लिखा रहता है यूज्ड टू सेल दिस ऑन द स्ट्रीट्स. अब वो बंदे का आरपी इतना अच्छा था कि वो बोल रहे थे कि ड्राइड स्पिनच है उसके अंदर. ठीक है, तो मैंने अभी के लिए मैंने ₹250 किसी को तो पूछा था, बोला था कि उसके ऊपर है हम लोग का कि उसके अंदर वीडी होता है, तो उसके लिए अभी तुमको सीज करना होगा. तो मैंने बोला कि देखो अभी मैं इसका रिपोर्ट बनाने जाऊंगा फॉरेंसिक्स में, लैब में जाऊंगा तो मुझे वो वीडी ही निकलेगा. तो मैंने सारा सीज किया था. So is that correct? You can take one pack from them. Being a police officer, won't you know the difference between a weed pack? Give me 1 minute. You can smell it out, but that is a very fundamental thing. Forensics में do we have that mechanism, by the way? किस बारे में? I don't think so. No. Yeah, वो बस खाली आरपी के लिए है वो चीज. That is your RP. नहीं, हमने किया नहीं अब तक. अगर हम ट्रैक डाउन करने लगे ना, जितनी गैंग्स है सबको ट्रैक डाउन कर लेंगे एक ही दिन में, कौन क्या बेच रहा है. That's the thing कि अभी के लिए मैंने किसी को वो रिवील नहीं किया, like how we can track the sellers. Okay. The thing is you get the forensic for that while selling. Okay. Shush. Let's not talk about that. You tell Gautam this point. You clear out with the Hardy and Abhishek later on. Okay? Not on streams. Okay? I don't want this on streams. This thing is hidden. Let it be hidden. Okay. Any other doubt till now? Because this. Okay, I have something to say. For example, somebody is selling something on the street, right? Yeah. So if you look over there from the torch, वहाँ पे drug sale के लिखे रहते हैं, like evidences रहते हैं. So can that be a probable cause? Because that person is directly standing in front of that. Ask the person. That I've been. ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीड पड़ा हुआ है, ये किसका है, ये वो. एंड ही विल से मुझे नहीं मालूम किसका है. ठीक है, यहाँ पे एक बंदा था. ही विल गिव यू एन एक्सक्यूज that there is okay there was somebody over here and he was handing out something as well, so maybe he was selling, but I'm not selling. That is still, by the way, RS. It's not probable cause. Yeah, that is still reasonable suspicion. नहीं, but सर हम बोल रहे थे कि अगर वो बंदा बेचते हुए देखा हम लोग, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि कोई और बेच रहा था? But still, it can be anything. You cannot assume. Pre-assume नहीं करना है. So अभी वो बेच रहा है. What is the proof that it came over here
while he was selling. Maybe it was there 1 hour ago. Somebody else was selling. Exactly. हंस भाई मैं इसका कुछ बोलूं एग्जांपल. Yeah, go on. ओके सो आप देखे वो कुछ ये कर रहा है एक्सचेंज का. You have seen something. Okay, Levi is here, right? You have seen something like he's exchanging with the locals, not once, twice, thrice. Okay, you're standing and observing, and you got only once the call of suspicious activity. Now you go there, you ask, and he says, "No, I was giving some chocolates or biscuits." But you detain him. When you get to the PD, when you're getting the evidences of his pocket, the pocket is empty. No traces of any kind of suspicious substance in his pocket. Now, if he's a very good RP player, he will go to the court. Now, tell me, how will you prove in the court that he was exchanging weed? While if you check the pictures, also he's hiding something under his hand, and lawyer will argue that. We get the Got it. उसमें अरेस्ट होगा ना, उसमें डायरेक्ट सर्च तो कर ही नहीं सकते. He will get arrested, but on what basis? On what basis will arrest? Have you seen what he's exchanging? Let's not confuse that. The simple rule is that when you spot somebody for the first time handing out something and you get a call from there, right? Sorry, you get a call from some place and you spot somebody handing out something. You're not. That comes under strictly under reasonable suspicion. You're allowed to investigate on that. You're allowed to talk to them, get their ID, question them, and if they refuse to do so, you have to tell them, okay, sir, I will be detaining you if you refuse to comply. It's as simple as that. And they have to, but always remember, as a police officer, you have to be transparent as well in some things. You have to get to things, like you have to tell them that, sir, okay, I won't be searching you, but I'll be needing a positive ID on you. Okay, so that thing should be there. Always remember that. Now, just want to summarize one thing on this. Also, just when Hans says if they fail to comply by not giving the IDs or removing the mask, it gives you probable cause to arrest them based on they are disobeying your orders as well as obstruction of justice. Like, you need to know it's legally, yeah. Because when you respond to a suspicious activity call, your investigation starts, right? Your investigation starts. You get into situation legally. You are getting into some situation, and you are, investigating on that area. So if somebody refuses to do so, they're hampering your investigation. Somebody is interfering and they're hampering your investigation, or let's say somebody is refusing to do so, to comply, so that comes under obstruction of justice. That will convert into from reasonable suspicion to probable cause immediately. Okay, now comes the second point, which what Rock said. Now let's say I got a call from the area. I saw somebody handing over something, and I decide to wait. I don't go and talk to them. I decide to wait. I see them handing over some stuff. Okay, now what happens is they're handing over stuff, and again I get the call. I see them handing over stuff. Again I get the call of this thing, reasonable suspicion call. So that will become reasonable suspicion. That will become probable cause immediately, because you saw them handing over something, and then you were like, and the call also came from that area. So that is like basically right in front of you a drug sale happened, because a local called you up and said that a drug sale is happening over here, and you saw somebody handing out some stuff. Is this point clear? Okay, Hans, I think many people will be again not cleared about your last point. Yeah, you clear it out then. Yeah. You clear it out. Okay. बहुत लोग का माइंड में ये होगा, अगर रीजनेबल सस्पिशन है तो हम डायरेक्टली डिटेन क्यों नहीं कर रहे. तो जस्ट अ थिंक, अगर तुम्हें कॉल आया, तुमने देखा कि उसको पकड़ते हुए, तुम जाओ, तुम डिटेन कर सकते हो, बट एज a part of PD we are requesting you to provide a little bit more RP. तो पहले जाओ, बात करो, and if he is like completely denying your what we say words, then yeah, go ahead for a detain, but yeah, don't just directly go and cuff. ये कहने का मतलब है हमारा, you are authorized to do it, but prefer to give more RP to the person. Are you getting us? Like ये point है उसका, Hans का, to provide more RP.
rather than going directly, go and simply cuff him. Is it clear या किसी को भी इसमें doubt है? Anybody has any doubts? No, sir. Okay, yeah, so you can detain him and okay, एक चीज और बताता हूँ. Frisk command में क्या होता है? Frisk is about guns and all that thing. तो drugs नहीं आते. तो mostly अगर उसका गन नहीं होगा तो वो ज्यादा कुछ इशू नहीं होगा. तो but RP करो पहले, उसके बाद ही जाओ उसके detain पे. So don't go directly, please. Like that's a request from Hans. Now comes the second point, the main point. Now, what if you found somebody in a suspicious area call, you had ID check on them and you warned them and you left the area. And now again you got the call of drug sale from the same area and you found the same person. And you then what to do? Right? Then it comes under probable cause. It directly comes under probable cause when it's their second time. But don't start pointing weapons directly on the people. Okay? Don't start cuffing them. Okay, there's somebody hiding in the bush. Fuck. Yeah. मेरे का एक चीज बतानी थी कि I have seen officers detaining people in felony. Yeah, felony stop. Felony, they will be detained. But नहीं detained like without proof वाला scene बोल रहा हूँ मैं. There is मतलब कि कैसे मतलब समझाने में. I mean, you don't have any reasonable suspicion or probable cause. Under felony stop ना. felony stop हुआ है तभी ना जब कोई suspicion या probable cause. नहीं बिना मतलब का हो रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ. मतलब कि वो felony stop without reason नहीं होना चाहिए था. ऐसे मतलब एक बार नहीं हुआ, मैंने ऐसे 3-4 बार देखा. So if you have clips for that, just forward कर दे, हम देखें. नहीं बस मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसे clips वाला scene नहीं है. Just to let I'll be very clear on the felony stops. There is only भाई कल करते हैं ना इस पे बात. कल मीटिंग है ना उस चीज की. कल करते हैं इस पे कल करते हैं. वैसे भी there will be training sessions like this on particular situations frequently. So yep. Walker, do one thing. Take the screenshot and let me know who the people who did not come and who did not post up a reason or DM you or me or anyone the reasons. Okay. I will take some sort of action against them. Okay, and let them know as well. So now comes the main point, is that second time what you do. Now you go there second time, you see the same person and you tell them, okay sir, I've spotted you again over here and again from the same area I'm getting the same call. So what I'm gonna do, don't start directly pointing weapons and cuffing them. Don't do that. That is like dirty job you are doing. Directly just going in, pointing the weapons and telling them to put their hands up, and if they ask, you just say, okay sir, you are second time here, so I'm gonna cuff you up and I'm gonna search you up. No, you have to talk to them. RP is not cuffing somebody. I'll tell okay, out of the topic, okay, it's off topic from this training. The biggest L a cop can take is the paperwork, in my opinion, personally. Is arresting somebody, bringing them to PD, take the fingerprint, attach photos, blah blah blah. That is the end of cop RP, in my opinion. That is the end of cop RP. You are stopping your own RP that way. Okay, so you don't have to directly go and start cuffing them and start searching. No, you have to go and talk to them. Talk to them and okay sir, this is happening again, so what I'm gonna do is that I'm gonna bring my canine, if you have a canine. So there are two situations. First, the canine thing, I'm gonna bring in my canine and he's gonna sniff you up, and if you find something suspicious, and then we'll go search you up, and if everything is clear, you are free to go, but if everything is not, you'll be get in. Okay, now here comes the next thing. The other person, now you will say that the other person doesn't comply. Obviously he won't comply. Why would he comply? He will start arguing with you. It's as simple as that. Okay, he will start arguing with you. So what do you have to do? He's not complying. Obstruction of justice, again the same point. You are under a probable cause and you are not complying, so you have to use force. You tell them, you exchange dialogue. Yeah, what? Okay, you exchange dialogues, you talk to them.
Okay, talking is RP, cuffing is not RP. Cuffing is basically, what is cuffing? This is cuffing, I'll tell you. The basic thing I have to tell you. This is cuffing. That's it. I cuff him up. Trey, can you move? Can you move now? Trey, can you move? No. Speed? No. That's it. End of RP. The end. No, this is not RP. This is competitive fucking RP. Competitive. This is not good. I don't want this in my PD. I'm trying to control myself since many days. I've been observing a lot of things. I've been third party complaints. I've been observing myself only these things. Less of talking is there, more of cuffing and shooting is there. Why? So you talk to them. If they don't comply, then you tell them that, okay sir, I will have to use force. I'm gonna cuff you up and I'm gonna search you by force then, because you are under a probable cause now and I have the full authority to do that. Okay, now then you can cuff them up, search them up, and if you don't find anything, you let them go. If you find anything, then you take them. Okay, now if you don't have a K9, now the second point, if you don't have a K9, if anybody wants to make notes of it, make notes of it. Okay, he's nothing. Maybe you will remember this, and my stream will be there. It will be public. You can anytime get into that thing, get on the stream and check the thing for reference. If you don't have a K9, second time you saw somebody in the same area, you talk to them, you tell them, okay, sir, this is happening. Please tell me that what is happening. Why are you doing this? Like, what are you handing out? But he will say, I told you I'm handing out some, let's say, something. Okay, but you tell them, no, it is not that. Now I know, because the local called me up. He said that somebody is handing out something very suspicious over here, and you are found here for the second time, right? And you talk to them and you give them a chance to talk back, right? Now, good. Then if the story doesn't match up, as Levi said, story doesn't match up, is giving very shitty reason, you detain them and cuff them up and search them up. Is everything clear till here? Everybody, anyone has any shitty question you have, put it on me and I will answer it very calmly and systematically. मेरे को एक डाउट है अंशु भाई, अभी कल देखिए हमारे पास K9 नहीं था, राइट? इन दैट केस कैन वी यूज दैट मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिन टारगेट या नहीं? एग्जामिन टारगेट इज देयर. We can we use it like अगर वो weed use कर रहा है हमको? Examine target is simple. I'll tell you. Examine target is like just stand at one place. Examine target is simple. Examine target is nothing but what you see. What are you seeing? IRL, let's say you're standing in front of somebody and you where is it? Police actions. Examine target. And you see that, okay, why are you sweating? Why are you breathing so heavily? Right? Westbound San Andreas. It is like that only. Yeah, even if you like smoke, na, तो it's like comes like smells like smoking, या फिर smells like alcohol if you drank alcohol. मेरे पास वीड है, मैं यूज करता हूं. मेरे पास वीड है, एक बार चेक करो ना, वो आपको स्मेल कर रहा है क्या? मैं वीड पूरा स्मेल करने के बाद एक मिनट रुको. Yeah, update me the 20. We got 2 interceptors by the way, like. Yeah, 10-4. Rock? Soon. I'm taking SOP exam for sergeants and plus. Northbound Adam's Apple. Hell yeah. तो अभी के लिए ट्रे से मेरी तुम्हारी डिपार्टमेंट तुम्हारे ट्रे से हुई थी. Hold. जैसे ट्रे एज अ हेड सर्जेंट ना, तो फॉर दो दिन के लिए वो अभी सर्जेंट है, ठीक है? उसका टेस्ट वापस होगा उस बारे में, रिगार्डिंग पीनल कोड्स एंड एज वेल. ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है? Are those any story will start falling apart slowly? Okay. Yeah, simple. The simple examine target. Okay, what happened? Did you have any workout or anything? You were running.
you know, like that. Don't use it like, bro, you're sweating, I can tell, body sweat, labored breathing, what is happening? No, don't be that dumb. Got Okay. it. Use it this is for RP purposes. So is that clear to everybody? Yes. The second point, reasonable suspicion, probable cause, drug calls, everybody cleared? Command members, whoever is the command thing, head sergeant, senior officer. If senior officer is not clear, command member will tell you again. Their job is there to train you. You can ask as many questions to them. Okay, now comes the next thing. Now sometimes what happens, what I do, how I like to do it, you know, let's say for the first time I found somebody and I talked to them, you know, I had a word with them, I had a chit chat, blah blah blah. Okay, you can always request them, always remember that you can request them. You can say that, okay sir, if you mind, only if you allow this to be used only under reasonable situation, not under probable cause. Always remember that. Okay, you need a permission for the other. Guys, we will do one thing. Listen up. I'm just gonna turn off my stream. ठीक है, मैं मीटिंग के बाद आता हूँ सीधे. Okay, we'll continue after meeting. क्या कहते हो? Should we do it? मैं आफ्टर मीटिंग आता हूँ, मैं अपना डिनर भी कर लूँगा अच्छे से. आफ्टर मीटिंग हम वापस कंटिन्यू करते हैं. Take the lead. ओके, मीटिंग हो जाए फिर आराम से मैं खाना वाना खा के फिर चालू कर दूँगा. ठीक है, चलो मिलते हैं. मैं आता हूँ मीटिंग के बाद.